हेलो गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो तो मेरे चैनल पे जाके न्यू लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हो। चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कैमरे को थोड़ा बराबर कर लेते पहले। जल्दी हो भाई, थोड़ा सा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। Right. Good evening. Today we are going to have a discussion regarding effects of remaining alloying elements. Like for example, the BCC elements and their effects, and HCP elements like titanium and niobium, their effects, aluminium and its effects, so-called boron and its effects. These will be initially discussed. Once the effects of alloying elements topic is completed, then we'll go into another major chapter on mechanical properties of materials. Right. So towards the mechanical properties topic, we will have to discuss one or two things regarding tension test, because most part of the tension test is completed, will be completed in strength of materials. Only one or two aspects related to tension test which are not going to be touched in strength of materials will be taken up for discussion here. In addition, we are going to examine the hardness test, various types of hardness tests, including Brindle's, Vickers, Rockwell's, the Tucon test, Noob test, Durometer test. Like similarly, Shore celeroscope or rebound hardness test, and then Morse hardness test. जो जो टेस्ट है उनका चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं. After the discussion on hardness test, we will be proceeding to impact test, creep test, and fitting test. As soon as we complete these mechanical properties discussion, we'll be trying to take some time, maybe 5 to 10 minutes of time, and then we'll be trying to give you the answers for the workbook questions related to alloys and phase diagrams topic, as well as mechanical properties topic. What I'm planning is like this, friends. Whatever the numerical problems are there in all these topics, what I'm planning to do is, for all these numerical problems, I'm trying to prepare the solutions sheets, numerical problems, solution sheets. I will try to see that these solutions sheets of numerical problems will be uploaded into your app, so that you can go through the solutions as worked out by me. When you see them, exactly they will be following the same principles as I spoke in the class. They will be in my own handwriting.
So solutions are going to be uploaded into the app for numerical problems. And for all the questions, I'm sharing the answers you can verify. Tomorrow, as we meet here, we'll be left with just corrosion and its prevention as one of the topics. That will take nearly an hour of time, followed by composite materials and narrow materials. These are very, very small topics. So once we are done with those things, we will share the workbook questions, the answers of workbook questions belonging to those three topics also tomorrow. So tomorrow is going to be the last date of instruction in respect of material science subject, right? And subsequently, another subject is going to start. And towards the end of my session, I will be receiving the information from the institute authorities as to which other subject is going to start. Probably, I'll be making announcement regarding that particular subject in tomorrow's class. Tomorrow is going to be our last day of instruction in material science. Later, we can be still in contact. You can be still in contact with me tomorrow in the closing session. I will be trying to share my personal email ID. You can use my personal email ID. In future, if you have any doubts or queries in the subject area, you can ask me through the mail without any hesitation. Right? My support is always there with you in all future in your learning process. Come on, friends. Let us try to take it that initially the topic that we are going to discuss is continuation of effects of alloying elements. So let me write here effects of tungsten, chromium, vanadium, molybdenum. This is the immediate next topic. Yesterday we have gone all the way up to the so-called nickel effects. Now we are seeing the effects of tungsten, chromium, vanadium, molybdenum. Initially we will write the general effects of all these things and then make a presentation of salient features. We write effect number 1. These are carbide forming elements in steel. These are carbide forming elements in steel. Carbide forming elements in these are carbide forming elements in steel. Number 2, they increase hardness and wear resistance. They increase hardness and wear resistance. They increase hardness and wear resistance. Similarly, we write here that they arrest grain growth. They arrest grain growth and result in grain size refinement. They arrest grain growth and result in grain size refinement. Right. Friends, I have taken 4 elements together and then I started writing the effects of all these 4 elements, right, at one place. Remember that these are the general effects of all these 4 elements. These 4 elements, as you know, they are BCC elements. Keep it in your mind that all BCC elements, when they chemically react with carbon in steel and result in formation of their corresponding carbides. Carbides being hard phases, they increase hardness and wear resistance in steel. That is the reason why they increase hardness and wear resistance in steel. Since they increase hardness and wear resistance, these elements are essentially added in tool steels. These elements are essentially added in tool steels. Because in the tool steels, if hardness and wear resistance is more, it gives rise to more life. That is the reason why hardness and wear resistance is increased, and all tool steels will invariably contain at least one of these elements. Tungsten, chromium, vanadium, molybdenum, at least one of the elements will be there in order to achieve this advantage. And then there is this third statement. They arrest grain growth and result in grain size refinement. Earlier we have been talking about grain size refinement. So I hope you remember. Grain size refinement is a strengthening mechanism, right? While talking about grain size refinement technique, I told you 2 things. That is, in order to achieve grain size refinement, there are 2 ways. The first method is by controlling the cooling rate. By controlling the cooling rate, it is possible to achieve fine grain structures. But how do you control the cooling rate during the solidification process in metal casting? Cooling rate can be controlled by adding these elements. Tungsten, vanadium, molybdenum, or any other BCC elements that are added, or HCP elements that are added, can also control cooling rate during solidification. When the cooling rate is slightly increased, at fast cooling rates, the grain structure which is developed in castings will be fine grain structure, right? So we write here, they arrest grain growth and result in grain size refinement. That is the reason why by adding these elements, the strength as well as hardness will increase due to grain size refinement that is taking place. Friends, from effects of alloying elements, you can expect 2 types of questions. Those of you who are appearing for engineering services examinations, those of you who are appearing for engineering services examinations, you know very well that effects of alloying elements in IES main examinations, in paper 2,
in IAS main examinations, in paper 2, you're going to get the first question. In the first question, there will be short answer question on effects of aligned elements. There you will have to write at least 3-4 effects of each element. That is the reason why I am explaining in such elaboration. But in gate examinations, they ask you only one effect of each aligned element. So there have been scientists. They try to identify all these BCC elements and HCP elements. They have these general effects. But each element will give rise to one predominant effect. Each element will give rise to one predominant effect. That one predominant effect is generally asked in gate examination. Therefore, for those of you who are appearing for gate examination, I am giving you the predominant effect now for each one of these elements in the form of a note. So let me write here, note. Tungsten predominantly increases. Tungsten predominantly increases. Tungsten predominantly increases. Heart strength, or heart hardness. But as we talk about heart strength means strength at elevated temperatures. Hardness means hardness at elevated temperatures. It's called heart hardness. So tungsten predominant effect is that it increases heart strength or heart hardness by tungsten carbide formation. Next, chromium predominantly increases corrosion resistance. Chromium predominantly increases corrosion resistance. Chromium predominantly increases corrosion resistance. Why? When you add chromium to steel, and then such a steel containing chromium is heated to higher temperatures, chromium oxide layer will be formed on the surface of the steel. This chromium oxide layer is called as a passive layer. That means that once the chromium oxide layer is formed on the surface of steel, that will not allow further corrosion to take place, further oxidation to take place. Oxidation is same as corrosion, right? So when one layer of chromium oxide is formed, it becomes a passive layer. It protects the steel from further oxidation. That is the reason why we say chromium increases corrosion resistance in steel predominantly. Next we say vanadium predominantly increases. Vanadium predominantly increases. Vanadium predominantly increases fitting strength or endurance strength. Fitting strength or endurance strength. Fitting strength or endurance strength. So what does it do? Right, metal casting process you must have heard about positive shrinkage elements and negative shrinkage elements. Hello, good evening. Similarly, when this vanadium is added, the vanadium carbide formation results in vanadium carbide formation. Vanadium is both carbide forming element as well as nitride forming element in steel. Vanadium is both carbide forming element plus nitride forming element in steel. Whenever nitrides are formed in association with the vanadium, yesterday only we have seen, nitride formation results in inducement of surface compressive residual stresses. In nitride treatment we have seen. Nitride formation results in inducement of surface compressive residual stresses. Wherever there are surface compressive residual stresses, they don't allow the fatigue cracks to propagate. That is the reason why fatigue strength of steel will increase, because vanadium can be a nitride former as well as carbide former. It results in inducement of surface compressive residual stresses. Therefore, crack propagation, fatigue crack propagation will be prevented. Hence, fatigue strength will increase. Next, molybdenum. We write here, molybdenum predominantly increases creep resistance. Molybdenum predominantly increases creep resistance or creep strength. Creep resistance or creep strength. Molybdenum is also a carbide forming element. Molybdenum carbides have very high temperature sustaining capability. Any phase which is having high temperature sustaining capability will increase the creep strength, because most of the creep fractures are temperature dependent fractures. Creep fractures take place more actively at high temperatures than at low temperatures. And when you add molybdenum, whatever molybdenum carbide is formed, it is having very high strength and high temperature stability. That is the reason why it increases creep strength in steel more predominantly. Right, friends. These are the effects of tungsten, chromium, vanadium, molybdenum elements, which are all BCC elements. Then we take into consideration the next set of elements. Let us say the effects of titanium and niobium. The effects of titanium and niobium. We understand these are the effects of, take into consideration the next set of elements. Let us say the effects of, these are
the effects of tungsten, chromium, vanadium, molybdenum elements, which are all BCC elements. Then we take into consideration the next set of our elements. Let us say the effects of titanium and niobium. The effects of titanium and niobium. We understand these are HCP elements. And remember, HCP elements are also carbide forming elements in steel. We write here, they are carbide forming elements in steel. They are carbide forming elements. They are carbide forming elements in steel. They are carbide forming elements. Whenever carbide formation takes place, hardness increases, wear resistance increases. In addition, titanium and niobium give rise to excellent resistance to oxidation at high temperatures. Therefore, we say corrosion resistance will increase, and because they are high strength materials, they give rise to excellent creep resistance also. So we write here. Number 2, they increase hardness, creep resistance, and corrosion resistance. They increase hardness, creep resistance, and corrosion resistance. Next, because they increase hardness, any element which increases hardness will not allow the grain growth to take place during solidification process. Therefore, it results in grain size refinement. So we write here, they arrest grain growth. They arrest grain growth and result in grain size refinement. And results in grain size refinement. Grain size refinement. Right, friends. Next, we proceed to another element called as aluminium. Effects of aluminium. We write here, aluminium is a powerful deoxidizer. But increases. We add to effects of aluminium. We write here, aluminium is a powerful deoxidizer. Always keep it in your mind that any element which is called as a deoxidizer, for that matter, silicon is a deoxidizer, manganese is a deoxidizer, aluminum is a deoxidizer, vanadium is a deoxidizer. So any element which is considered as a deoxidizer will first itself undergo oxidation. Silicon is a deoxidizer, manganese is a deoxidizer, aluminum is a deoxidizer, vanadium is a deoxidizer. So any element which is considered as a deoxidizer will first itself undergo oxidation. It will chemically react with oxygen in the molten steel, and it will first undergo oxidation. When it undergoes oxidation, there is no more amount of free oxygen available. That is the reason why there is no oxidation of steel molten metal that will take place. Right? So to prevent oxidation of molten steel, one of the essential elements added as deoxidizers is aluminium. Number 2, aluminium acts as a grain size refiner. Aluminium acts as a grain size refiner. Next, number 3, aluminium increases brittleness in steel. Aluminium increases brittleness in steel by forming compounds with iron. Aluminium results in compound formation with iron. That when compound formation takes place, compounds are brittle phases. That is the reason why if you add more and more amount of aluminium, more and more amount of compounds will be formed, more and more amount of brittleness will increase in steel. This is the reason why more amount of aluminium should not be added in steels as alloying element. Only minor amount of aluminium is added for the purpose of deoxidation. Right. Then comes another element, effects of boron. Effects of another element, boron. Effects of another element, that is boron. We write here, boron increases surface hardness. Boron increases the surface hardness, right, in brackets, because it is a nitride forming element. Because it is a nitride forming element in steel. It is a nitride forming element. Boron is a nitride forming element in steel. बेटा सुना होगा नाइट्राइडिंग heat treatment में
We told nitriding is a heat treatment given to steel in order to increase the surface hardness. Right? Now, alloy steels are best suited for nitriding treatment. Why? What are the alloying elements are there in steel? All the alloying elements in steel are nitride forming elements. Point number one. And point number two, alloy nitrides are not only hard, they are also tough. In surface hardening applications, we need a combination of two properties. Surface should be hard, core should be tough. So by nitriding treatment, we are going to have these two advantages. And for nitride formation on the surface, boron is a helpful element in steel. Hence, boron is added in steel in order to result in nitride formation and increase in surface hardness. Next, boron increases wear resistance and corrosion resistance. Boron increases wear resistance and corrosion resistance. Friends, yesterday while talking about nitride, I believe I have spoken with you. Nitrided layers are non-metallic in nature. Because they are non-metallic in nature, they have high resistance to corrosion. Boron is a nitride forming element. Nitrides result in non-metallic nature. Therefore, corrosion resistance will increase. Right? Boron is an element which results in nitride formation. Boron nitrides will have very high hardness, surface hardness increase hota hai. And then that is the reason why wear resistance will increase. Since wear resistance increases, corrosion resistance increases, and surface hardness increases, these are the desirable properties in tool steels. That is the reason why boron is extensively employed as an alloying element in tool steels manufacturing. All right? Come on, friends. Now, those are the effects of alloying elements that we could not complete in the previous day. Now that we are done with them, we will now proceed towards the next topic on mechanical properties of materials. Right. These are the aspects that we wanted to share with you today about effects of alloying elements that are completed. Now that the effects of alloying elements are completed, we are proceeding to the topic on mechanical properties of materials. Mechanical properties of materials. We write here, the first test is tension test. Right. In the heading itself, I will write, this is continued from strength of materials. It is continued from SOM, that is strength of materials. That means major part of tension test is going to be completed there in strength of materials. Only a minor part will be taken up for discussion in this online class on material science. So what are those aspects that we are going to discuss in material science related to tension test? Two things are there. Number one is called determination of strength coefficient. Determination of strength coefficient K. Determination of strength coefficient K and strain hardening exponent. Strain hardening exponent N. We want to show how these two parameters can be determined. Strain hardening coefficient, strain hardening exponent and strength coefficient can be determined by using tension test data. Right? This is not going to be covered in strength of materials because these two properties are related to permanent deformation behavior of material. Alright. So let me carry on the discussion. In permanent deformation region, that is between elastic limit, EL stands for elastic limit, and ultimate tensile stress point, between elastic limit and ultimate tensile stress point. That region is what is called as the permanent deformation region. In that particular region, sigma T will be given by K into epsilon T to the power of N. Friends, this is what we call as the Holman equation. Holman equation, or it is also called as power law equation. It is also called as the power law equation. In this equation, we write where sigma T is called as the true stress. Sigma T is known as the true stress. This true stress value is calculated from tension test data. Friends, in the tension test, you are going to have load versus elongation readings. Load divided by original area gives you engineering stress. Elongation divided by original length gives you engineering strain. So load versus elongation data from tension test, it is transformed into engineering stress versus engineering strain data. In strength of materials, there are derivations between true stress and engineering stress, true strain and engineering strain. So let us try to understand that true stress is given by engineering stress into 1 plus engineering strain. Right? Engineering stress is based on original area, true stress is based on instantaneous area.
In a tension test, as the load is gradually being increased on the specimen, length of the specimen keeps on increasing and area of cross section keeps on decreasing. However, for the purpose of calculation of stress, if you take load divided by original area, that will be called as engineering stress. If you take load divided by instantaneous area, that is called as true stress. Similarly, elongation divided by original length gives take load divided by for the purpose of calculation of stress. If you take load divided by original area, that will be called as engineering stress. If you take load divided by instantaneous area, that is called as true stress. Load divided by original area, that will be called as engineering stress. If you take load divided by instantaneous area, it is called as true stress. Similarly, elongation divided by original length gives you engineering strain. Whereas the elongation divided by instantaneous length that gives you true strain. Instantaneous length that gives you the elongation divided by instantaneous length that gives you true strain. Between these stresses and strains, compared to engineering stress, true stress is more accurate. Compared to engineering strain, true strain is more accurate. Therefore, in strength of materials discussion, there are mathematical derivations in strength of materials chapter number 1, wherein you will find that sigma t is the true stress equal to engineering stress into 1 plus engineering strain. This comes based on a mathematical derivation in strength of materials chapter number 1. Right? In this expression, we write sigma E is called as engineering stress, and epsilon plus math equals to region in permanent deformation region in elastic limit. EL stands for elastic limit and ultimate tensile stress point. Between elastic limit and ultimate tensile stress point, that region is what is called as the permanent deformation region. In that particular region, sigma t will be given by k into epsilon t to the power of n. Friends, this is what we call as a Holman equation. Holman equation, or is also called as power law equation. Is also called as the power law equation. In this equation, we write where sigma t is called as the true stress. Sigma t is known as the true stress. This true stress value is calculated from tension test data. Friends, in the tension test, you are going to have load versus elongation readings. Load divided by original area gives you engineering stress. Elongation divided by original length gives you
n can be written as it is, log epsilon t can be written as x. Right? That means if you take the log epsilon t readings on x-axis, log sigma t readings on y-axis, it is going to be in the form of a straight line having y-axis intercept c. So let me show you that particular graph here. That is, if I draw a graph here between log sigma t on y-axis and log epsilon t on x-axis, I'm going to get this particular graph like this. Right? Now, this y-axis intercept, you can measure it directly from the graph. First, construct this graph by using tension test data. Then find out what is this y-axis intercept. This y-axis intercept gives you the value of c. Y-axis intercept gives you value of c. Then the slope of this graph dy by dx gives you the value of Steinhardling exponent n. Right? Now, using this relationship, construct this particular graph. Once the graph is ready, measure the value c directly from the graph and calculate the slope of the graph. Right? Once you know these two parameters, using these two parameters, you will be in a position to calculate n and k. So I write here, to find n and k, क्या करना है? C is equal to log k. C is equal to log k. What is C? C is y-axis intercept of the graph. So directly measure it from the graph. When you measure it from the graph, you know C value. Then the only unknown in this expression is left side is known, only k is unknown. Find out the value of k. When you find out the value of k, that k is called as a property of the workpiece material. It is called as strength coefficient. K is known as strength coefficient. Similarly, try to find out slope. Slope of this graph is found out by dy divided by dx. That slope of the graph gives you the value of n. Find the slope, you will be in a position to find the value of n. If you find the slope of the graph, you will be in a position to find out n value. N is known as strain hardening exponent. Right? Normally speaking, its value is approximately 0.1 to 0.5 for most of the metals that are used in engineering applications. For most of the metals used in engineering applications, strain hardening exponent n will be having this value. All right. Now we should know what is k, what is n. K is strength coefficient. It's a property of material. All right. But what is k? How do we understand? Let us see. Foreman equation may be observed here. Suppose epsilon t takes a value of 1. If true strain is equal to 1, then 1 raised to any power n is equal to 1 only. Then 1 into k is k. All that is equal to sigma t. That means k is equal to sigma t. K becomes equal to sigma t, that is true stress, when true strain is equal to 1. K is equal to true stress when true strain is equal to 1. Correct? Right? That is how we define the strength coefficient K. Please write down. I am giving you dictation for strength coefficient. Write down. Strength coefficient equal to 1 comes equal to strain. K is strength coefficient. It's a property of the material. All right. But what is K? How do we understand? Let us see. Formally, when true strain is equal to strength coefficient. Right now.
पप्पा टीवी का आवाज कम करो ना। पप्पा टीवी का आवाज कम करो। तो टाइम लगता है कैमरा सेट करने को। Strength coefficient K is defined as strength coefficient. Strength coefficient K is defined as strength coefficient K is defined as the true stress at a true strain of unity UNITY. The true stress at a true strain of unity 1. Next, we should know what is strain hardening exponent. n strain hardening exponent बोले तो what is it, how to understand it बोल के डाउट आते रहते हैं ना। अब लिखो बेटा n के लिए, n के बारे में एक सेंटेंस लिखो। स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट Now I am giving dictation. Strain hardening exponent n is defined as strain hardening exponent n is defined as an index of ductility, an index of ductility, toughness, and ability of the material to resist necking tendency, necking tendency. Right, let us write to resist necking tendency. Right, let us write, examine it here. दोस्तों अभी देखिएगा कि what is here, n is an index of ductility बोल के बोला है, n is an index of toughness, n is an index of resistance offered by a material to necking tendency. Come on, sir, where are we going to use n? Suppose you have to select a particular steel or a particular material for metal forming applications. When you have to select the materials for metal forming applications, for example, for a particular application, there are 3-4 candidate materials with you. There are 3-4 alternative materials with you for a particular application. Each material will have its own n value. Now, which material is to be selected for metal forming applications? A material which is having higher value of n must be selected. Sir, why? A material which has higher value of n will have more ductility, more toughness, and hence better formability.
यू नो अंडरस्टैंड? जिस मटेरियल के साथ अच्छी तरह का डक्टिलिटी है, जिसके साथ अच्छी तरह का टफनेस है, जिसके साथ एक्सेलेंट फार्मेबिलिटी मिलता है तुम्हें. So in metal forming applications, the candidate material is selected based on n value. So higher value of n is good or lower value of n is good? Higher value of n is good. Why? Higher the value of n, more will be the ductility, more will be the toughness, more will be the formability. You got the point? Now, there is something more that I have spoken in your dictation. N is an index of ductility, toughness, and resistance offered by a material to necking tendency. Okay, मैं बोल दिया. But what is necking tendency? When does this necking tendency take place, or how does this necking tendency take place? That is what I am now going for explanation. Condition for necking. You right here. Condition for necking. Condition for necking. Friends, let me try to show you here. Suppose this is the load versus elongation diagram of a material like mild steel. Load versus elongation diagram of a material like mild steel. Now, for this material, that is how the load versus elongation diagram will be. Let us see. Material is mild steel. Now, friends, in this particular diagram, this point is called as maximum load point or ultimate load point. It is called maximum load or ultimate load point. Now, up to ultimate load point, the region which is there on the left side of this graph, is what is called as uniform elongation region. This region is called uniform elongation region. Uniform elongation region. The region which is on the right side of this, ultimate load or maximum load point is what is called as non-uniform elongation region. This is called as non-uniform elongation region. Non-uniform elongation region. So why it is so called? Is there any reason to call these two regions with these names? Answer is yes. Suppose this is the specimen at maximum load. Now friends, let us try to see. In a tension test, come on friends. In a tension test, what's going to happen is, as the externally applied load is gradually increased, length of the specimen keeps on increasing, area of cross section decreases gradually. So the specimen will be experiencing two types of strains. One is called longitudinal tensile strain, which increases the length of the specimen. The other is lateral compressive strain, which results in decreasing the area of cross section. Right? ये दोनों strains एक दूसरे को balancing करता रहता है until you reach maximum load point. That means longitudinal tensile strain and lateral compressive strain balance each other all the way up to maximum load point. That is the reason why you call this region as uniform elongation region. Right? Now, the moment when this maximum load point is reached, so whatever the internal microscopic voids are there inside the material, those microscopic voids will be coming together, will be coming close to each other because the area of cross section is gradually decreasing. When those microscopic voids merge together, they result in formation of a bigger sized crack. Let's say, for example, these microscopic voids merge together into a bigger sized crack. Now, when microscopic voids merge together into a bigger sized crack, or inside the bigger sized void or bigger sized crack, there is no material. But how much amount of load is acting? Maximum load is acting. Highest load is acting on a material inside which there is a bigger sized void or a crack that is formed. In this entire region, there are no atoms, there are no bonds. Therefore, when microscopic voids transform into a bigger sized void, material loses its internal resistance. So material अपना internal resistance को खो गया because of bigger sized void formation. On one side, this is happening. On the other side, maximum load is acting on the material. But the maximum load cannot be supported by this weak material. Therefore, what happens? Because internal resistance has got decreased, now the lateral compressive strain becomes larger than longitudinal tensile strain. That means what? Area of cross section starts decreasing rapidly compared to increase in length. Area of cross section starts decreasing rapidly compared to increase in length. When the area of cross section decreases rapidly, it results in necking tendency. Let me try to show you that. Let me try to show you the effect of this bigger size void formation.
Hello, bhai. Welcome to the stream. Thank you for joining. That is how the neck formation is going to take place here in this region, right? So here I show you that's how the area of cross section decreases rapidly. Area of cross section decreases rapidly compared to increase in length. When area of cross section decreases rapidly, neck formation will take place or necking will take place. Right? This is what we call as necking tendency. This is known as necking tendency. Right? Now when necking takes place, the area of cross section will decrease rapidly, right? Why is the area of cross section decreasing rapidly? Internal resistance is decreased. Now tell me, when any material internal resistance is decreased, can you apply more load on it? You cannot apply. If the material offers resistance to load, you can apply more load. If the material internal resistance is decreased, it is not able to bear the applied load itself, you cannot increase the load. Therefore, externally applied load will keep on decreasing. So people will ask you in interviews, why is this graph decreasing after maximum load? This graph is decreasing after maximum load because material internal resistance is decreased due to necking effect. This decline in the graph is due to necking effect. Right? Now once you understand this, you can always ask, sir, when does this necking take place? ये वाला necking होने के लिए कौन सा condition satisfy करना पड़ता है? Come on friends, let us see here. Condition for necking is, we write here. Necking takes place at maximum load. At maximum load. Necking takes place at maximum load. लेकिन दोस्तों, in the load versus elongation diagram, when load goes to maximum value, what happens in two-stage diagram बोल के साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? मैथमेटिकल डेरिवेशंस किया. And those mathematical derivations are available in chapter number 1 of strength of materials. Right?
So when load reaches maximum, what will correspondingly happen? Means when load reaches maximum, when load reaches maximum, d sigma t by यहाँ लिखेंगे when d sigma t by d epsilon t becomes equal to sigma t. What is this, sir? जब लोड मैक्सिमम वैल्यू रीच करता है इस ग्राफ में, उसी समय में ये वाला कंडीशन सैटिस्फाई होता है. ये कंडीशन क्या बोल रहा है? d sigma t by d epsilon t means what? True stress true strain diagram बोल के आप सुना होगा. When you take true stress true strain diagram, true stress is on y-axis, true strain is on x-axis. Therefore, d sigma t by d epsilon t means dy by dx. That means this is the slope of true stress true strain diagram. So when load reaches maximum value in loaders along a diagram, in a true stress true strain diagram, the slope will become equal to true stress. This is the meaning of this condition. Slope of the true stress true strain diagram becomes equal to true stress. And now, when this condition is satisfied, in true stress true strain diagram, necking will take place. In load versus elongation diagram, when does necking take place? When load reaches maximum value. In true stress true strain diagram, when does necking take place? Necking takes place when the slope of true stress true strain diagram becomes equal to true stress. लेकिन पोलमैन इक्वेशन को कुछ देख लिया बेटा आपने. दिस इंप्लाइज पोलमैन इक्वेशन क्या बोल रहा है? सिग्मा टी इज इक्वल टू k into epsilon t to the power half m. This is sigma t according to Pohlmann equation I have given you earlier. Now if this is the value of sigma t, differentiate this sigma t with reference to epsilon t, you will get the left side value. So d sigma t by d epsilon t, बोले तो इसका डिफरेंशिएशन करें with reference to epsilon t. What are you going to get? k into n into epsilon t raised to the power of n minus 1. Right? So what does this actually mean by? K and k gets cancelled. Therefore, this implies that n is equal to epsilon t. Epsilon t. n is equal to epsilon t. बेटा, necking कब बनता है? Is an interview question. What are the conditions for necking? Interview question. Right? In one of the recent competitive examinations also I have seen exactly same thing was asked. What are the from the following choices A, B, C, D? Find out the conditions for necking. बोल के बोलिए. कौन सा कंडीशन है भैया? Number 1, load should reach maximum value. Number 2, d sigma t by d epsilon t should be equal to sigma t. Third, strain hardening exponent must become equal to 2 strain. Strain hardening exponent becomes equal to true strain. At that moment, necking will take place. तो तुम्हारे सामने मैं 3 conditions को रख लिया बेटा. All these 3 conditions are not independent conditions. They are all mutually dependent conditions. When load value reaches maximum in tension, उसी समय में टू स्ट्रेस टू स्ट्रेन डायग्राम में ये वाला कंडीशन सैटिस्फाई हो जाने की वजह से पोलमैन इक्वेशन अप्लाई करके आप यहां तक पहुंच सकते हैं. सो दीस आर ऑल 3
conditions, but three dependent conditions. They are dependent on one another, right? So yaad mein rakhiyo beta, because the GATE examination at present, it is having what is called as multi-select questions. Means in the multi-select questions there will be more than one correct answers. So what are the three correct answers that you have to tick? When load reaches maximum value, nicking takes place. When df sigma t by df epsilon t becomes equal to sigma t, nicking takes place. When strain hardening exponent becomes equal to true strain, nicking takes place. ये तीनों conditions को आपको टिक करना पड़ता है. I have included this question in your workbook. Okay, beta? It is there in mechanical properties chapter. Right. These are the things that I wanted to cover from tension test, because rest of the things are going to be covered in strength of materials, and so I'm not touching that, because strength of materials will touch all the aspects right from the beginning of how the curve is obtained, load versus elongation diagram, how it is transformed into stress strain data, then what is elastic limit, what is proof stress, what is yield stress, what is upper yield point, what is lower yield point, और ultimate tensile stress point, breaking stress point, इनको कैसा define करेंगे बोलते वो सारा चीज जो रहता है बेटा, including resilience, modulus of resilience, proof resilience, toughness, modulus of toughness के बारे में सब कुछ वहाँ पर कवर कर दिया जाता है. इसी के वास्ते मैं वो कवर नहीं किया. क्यों बोलते वो सारा कैलकुलेशंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में इंपॉर्टेंट होती है. इसी के वास्ते एसओएम में कवर कर दिया जा रहा है. Now these are the aspects which are important for metal forming applications. That is the reason why I have done them here as extension of tension test. Rest of the aspects related to tension test will be covered in strength of materials subject. Right. Once you have reached this point, let us proceed to the next one. Hardness test. Hardness test. We write them as indentation hardness test. Indentation hardness test. Indentation hardness test. Write one sentence. These tests use resistance to permanent deformation. Resistance to permanent deformation, by indentation on surface. Resistance to permanent deformation by indentation on surface. As the principle of determination of hardness. Please stop rakho. Now please listen to me. Friends, when you want to know what is hardness, this is a fundamental requirement. As you go to hardness test, you should know basically what is hardness. What is hardness? Different people have defined hardness in different bases. Someone defined hardness like this: resistance to permanent deformation by indentation on surface. They try to take an indenter material through an indenter. They try to apply a load onto the workpiece surface. When a load is applied through indenter on a workpiece surface, the workpiece surface will undergo plastic deformation or permanent deformation. Now, resistance offered by the surface of the workpiece to permanent deformation is taken as hardness. So, hardness is defined as resistance to permanent deformation on surface. Hardness is defined as resistance to permanent deformation on surface. But this is one of the methods of defining hardness. Another method of defining hardness is also there. Resistance to elastic deformation is also there. But the test is different. That's called a Shore celeroscope. It's also called as rebound hardness testing. It measures hardness as resistance to elastic deformation on surface. There is a third technique. Resistance to scratching. That's called as mineral hardness test. And in our presentation today, we are going to see all these tests. Initially, I am taking up indentation hardness test. That means in all these tests that we are going to cover under this heading, hardness is defined as resistance to permanent deformation by indentation. Resistance to permanent deformation by indentation. That is defined as hardness.
So what are the tests here, sir? Under this indentation hardness test, we have Prelims hardness, Vickers hardness, Rockwell hardness, Yukon hardness, Knoop hardness, and Eurometer. Right? These are the techniques. Brinell hardness, Vickers hardness, Rockwell hardness, Knoop hardness, and the Yukon hardness, Eurometer. These are the tests that depend upon this indentation hardness testing principle. So what is that we are going to see in all these tests? We are going to examine what is the indenter material employed, what is the indentation geometry, how much of load is to be applied, what is the formula for calculation of hardness number. Such aspects are going to be written by us, right? In one shot page. Everything will be available at a glance, so that in future, if you want to refer to that, it will take a very, very less time. Come on, let us try to do that. Indentation hardness test. So we are initially going to write certain aspects here related to the so-called indentation hardness test. Related to the indentation hardness test. Okay? So let us try to write. Number one is called as Brinell's hardness test. Brinell's hardness test. Right. Number one. We write here some column-wise information. What is the test? Right. And then we write what is the indenter material. What is the indenter material? Then we write indentation. Indentation. Side view. Indentation side view is going to be given. And at the same time, we are going to show the top view of indentation. Indentation side view, indentation top view. Then we write what is the load, how much load is to be applied. In kilograms, what is the load that is to be applied? And then what is the formula for calculation of hardness number? What is the formula for calculation of hardness number? What is the formula for calculation of hardness number? These are the details that we are going to write here. Come on, friends. First one, let me take a different color here, so that you can follow the information here. Indentation side, indentation top. Right? These are the headings that you have. It is here. Right? So the first one is Brinell's test. First test is known as Brinell's test. Brinell's test. Right. Indenter material employed is 10 mm diameter hardened steel ball. Indenter material is 10 mm diameter hardened steel ball is employed as indenter. Or you can use the tungsten carbide ball. You can use tungsten carbide ball as indenter. Tungsten carbide ball is used as indenter. The indentation side में कैसा दिखता है? This is called as indenter. By application of load on it to it is allowed to make an indentation cavity in the workpiece surface. This cavity which is produced by application of load through the indenter this cavity is what is called as indentation. This particular element is the 10 mm diameter hardened steel ball known as the indenter. Now this line is indicating the test surface of the specimen. Now when you apply load, this particular indentation that is going to be formed will be in the form of a circle. It will be in the form of a circle. Right? This is indentation. This is indentation diameter small d. That is exactly what I am trying to show you here. This is indentation diameter small d. Right? And this is indenter. This is capital D shows indenter diameter. So I will write here capital D is diameter of indenter. Diameter of indenter. And small d is known as diameter of indentation. Diameter of indentation. Indentation is a cavity produced on workpiece surface by permanent deformation. Then how much load you are going to apply? The load that is going to be applied may be 500 kilograms or 1000 kilograms or 3000 kilograms depending upon the test material. For example, if it is aluminum, you may apply 500 kilograms. If it is brass, you may apply 1000 kilograms. If it is steel, you are going to apply 3000 kilograms. So the harder the material, more will be the load that is to be applied. Softer the material, lower is the load that is to be applied. So the load that is to be applied depends upon what is the workpiece material. For each workpiece material, there is a different load, there is a different value of load, there is a different time for which the load is to be applied. Right? Now, after application of load, let's say for 10 to 15 seconds of time, depending on workpiece material, indentation cavity will be formed on the workpiece surface. Find out its diameter by using a separate type of micrometer, by using a separate type of microscope called as Brinell's microscope. When you know what is the load, what is the capital D, what is small d, you will be able to use the formula for calculation of Brinell hardness number. Yes, that is what I am trying to show you here. Let us say the formula we use here is Brinell hardness number PHN is equal to 2p divided by. Let me scroll the screen for your convenience. You can see it clearly. Then we can move. 2p divided by pi d into capital D minus square root of capital D square minus small d square. In this formula, PHN means Brinell hardness number, where PHN means Brinell's hardness number. Brinell's hardness number. Okay. And capital B is the load to be applied. The load to be applied. Right? Capital D is indenter diameter, small d is indentation diameter. That is how, when you conduct the test, all these parameters will be known to you. Capital D will be known to you before conducting the test itself. After conducting the test, after application of load for specified amount of time, you will be able to find out small d value by using Brinell's microscope. Then when capital D and small d are known, using the formula, we will be able to find out what is called as Brinell's hardness number. Alright, that is regarding the Brinell's hardness test.
Now, what exactly happens in the Vickers test? Let me take up that. Second test is called Vickers test. Vickers hardness test. Vickers hardness test. In Vickers hardness test, we are going to make use of a square-based diamond pyramid indenter. Square-based diamond pyramid indenter is used. Square-based diamond pyramid indenter. Square-based diamond pyramid indenter is used. Now, how does the side view of the indenter look like? The side view of the indenter looks like this. Like this. The indenter will be. It's a square-based indenter. It is a square-based indenter. Such that the included angle between the opposite slant surfaces, will be 136 degrees. Now, this is actually indenter. Now, through this indenter, a load is applied, so that the indenter penetrates into the workpiece surface and causes permanent deformation. When the permanent deformation takes place on workpiece surface, this cavity is going to be seen from the top. That means you are going to see top view of this indentation cavity. The top view of this indentation cavity will be in the form of a square or a rhombus. It will be in the form of a square or a rhombus. So what you are seeing here is top view of indentation. In the top view of indentation, there will be two diagonals. Right? These two diagonals will be called as D1 and D2. They are called as D1 and D2. Now, these D1 and D2 are what are called as the diagonals of indentation. D1, D2 are diagonals of indentation. They are diagonals of indentation. They are diagonals of indentation. They are measured by a special type of microscope known as Vickers microscope. Once D1 and D2 are known, they try to calculate average value of the diagonal of indentation. The average is calculated as D1 plus D2 divided by 2. The average is calculated, the average diagonal of indentation. The load which is to be applied in Vickers hardness test ranges from 1 to 120. The average is calculated. Average diagram of indentation. Then 1 to 1 and 1 kg to R each 1.8544 into P divided by D average square. 1.8.
लाना पड़ता 95 रुपीज है ना प्लेट शेव की भाजी शेव की भाजी आज कम कर उसको आवाज बंद करतो आवाज आता ना बस 2 मिनट 544 into P divided by the average square. That is how Vickers hardness number is decided. The DHN is Vickers hardness number. Vickers hardness number. Vickers hardness number. Alright. That is regarding the so-called Vickers hardness test. And always remember, Vickers hardness has a superiority compared to Vickers hardness in the sense that whatever the Vickers hardness number we calculated. This Vickers hardness number is always independent of load. Vickers hardness number is independent of load, right? So never forget this important statement. And can be compared to Vickers hardness in the sense that whatever the Vickers hardness number we calculated here, Vickers hardness test, and always remember, Vickers hardness has a superiority compared to Vickers hardness in the sense that whatever the Vickers hardness number we calculated here, this Vickers hardness number is always independent of load. Vickers hardness number is independent of load, right? So never forget this important statement, and then move forward. That is, and independent of load. Vickers hardness number is independent of load, right?
So never forget this important statement and then move forward. That is, once the rigorous hardness test is completed, we'll now take care of what is known as the third type of test, known as the Rockwell hardness test. We take the third test, the Rockwell hardness test. The third test is Rockwell test. Rockwell hardness test. We write here, it makes use of a braille indenter. It makes use of a braille indenter. When I say braille indenter, it means it is a conical stainless steel indenter. Sorry, conical black diamond indenter. Braille indenter is a conical black diamond indenter. That's called a braille indenter. Conical black diamond indenter is called as a braille indenter. Normally, if you see the side view of the indenter, that is how it looks like. Side view of indenter looks like that. It will be in the form of a cone. It will be in the form of a cone, such that the included angle between the opposite sides that are shown here, included angle of the conical indenter is going to be 120 degrees in case of the so-called Rockwell hardness test. And here is the test surface. This blue line indicates the test surface. Through this indenter, we are going to apply a certain amount of load. A load depends on what is the test material. Like load and time for application of load both will depend upon what is the test material. Accordingly, you will be applying either 60 kilograms or 100 kilograms or 150 kilograms, depending upon what is the test material. Right? Now, when you apply a load through this particular conical indenter, the geometry of indentation that you are going to produce, since this is conical, when it penetrates the work surface, it gives rise to a circular type of indentation. This is the top view of indentation. This is the top view of indentation. It's going to be a circular geometry indentation. Now, the load to be applied in this test may be 60 kilograms or 100 kilograms or 150 kilograms. That is the load to be applied. Right? The specialty of Rockwell hardness tester is Rockwell hardness tester will have multiple different scales on a dial. There are no formulae. There is no calculation. The dial reading itself gives you hardness value. Therefore, we write here. There are no calculations involved in Rockwell hardness test. No calculations. We write here. No calculations involved. Dial reading directly gives hardness. Dial reading directly gives hardness based on actual depth of penetration. Based on actual depth of penetration of indenter. Based on actual depth of penetration of indenter. There are no calculations here. There are no calculations, no formula, nothing doing. The dial is directly calibrated to give you hardness value of your piece material. Now remember, based on workpiece material, you have to select the load. Based on workpiece material, you have to select the time for application of load. There are multiple different scales like A scale, B scale, C scale, D scale, E scale, F scale. Okay. There are even 7 scales that are available. Certain group of hardnesses are to be found out on certain scale. That means why there are 7 scales? These 7 scales, each scale is allocated to a particular range of hardnesses only. So soft materials are referred or read in one scale. Medium soft materials are slightly hard materials are read on second scale. Very hard materials can be read on another scale. Is the point here. So based on the actual hardness of workpiece material, different grades of workpiece materials can be read. Their hardnesses can be read on different scales. That is the reason why Rockwell hardness test provides for possibility to read more correct values, no time delay, fast test method of hardness testing, no formulae, no calculation errors, no surface preparation is needed before going in for hardness testing. Those are the beautiful points related to Rockwell hardness test. Right. Now let's see. Having seen the Rockwell hardness test, we are now going for the next immediate test. We say noob hardness test. Number 4. Noob hardness test. Noob test. Friends, this is called as a micro hardness test. This is known as a micro hardness test. Right. Then what will be the indenter that is used? Indenter employed is a diamond pyramid. Indenter employed is a diamond pyramid. Indenter employed is a diamond pyramid here. I'm going to show you the indenter geometry. This is how square base. It is not exactly square. Right? It's slightly oblong. It is a diamond pyramid. And for this particular diamond pyramid, the included angle between opposite side surfaces is going to be around 172 degrees 30 minutes. That is the indenter. And here is the workpiece material whose surface is being tested. So as the indenter penetrates into the workpiece surface, it results in creation of indentation. The indentation will be in the form of a rhombus like this. Indentation will be in the form of a rhombus like this. These are called two diagonals. These are two diagonals. The longer diagonal is what is being indicated by the letter capital L. Capital L is the longer diagonal. Similarly, if you examine the shorter diagonal, this is the shorter diagonal of indenter. Shorter diagonal of indentation is what is being indicated by B. And we try to see that the load to be applied in this particular test is between 25 grams to the load to be applied in this particular test is between 25 grams to 5 kilograms. Load to be applied is between 25 grams to 5 kilograms. That is the load to be applied. The load to be applied is 25 grams to 5 kilograms. And in this noob test, the formula for calculation of noob hardness number, I write it here, KHN, that is noob hardness number is given by the formula 14.2 into capital P divided by L square. P is the load to be applied. L is this longer diagonal of indentation. Right. 14.2 P divided by L square is the formula which is used for calculation of noob hardness number. KHN denotes noob hardness number. Noob hardness number is KHN. Right. So friends, here we write a note. That is, this test is used for. This test is
used for loop hardness test is used for hardness testing of very thin specimens, very thin specimens. It is used for hardness testing of very thin specimens, very brittle materials, such as gemstones, carbides, glass, and individual grains in metal. Individual grains in metal. Friends, why I have given these details for loop hardness test means in many competitive examinations, including PSUs, there is no focus on applications of other tests, but people are asking on applications of micro hardness tests such as loop test and Tucan. So invariably, I am going to give you in those tests because they are repeatedly asked in the competitive examinations. Come on. That is regarding the so-called loop test, and then I proceed to next immediate test called as Tucan test. We write here Tucan hardness test number 5. Tucan test. This is also called as a micro hardness test. Because these tests make use of very small loads. They are called as micro hardness tests. Right? Similarly, these tests are used for finding the hardness of individual phases or individual grains which are seen only under the microscope. That's the reason why they are called as micro hardness tests. Now, Tucan hardness test uses same indenter as Vickers test, that is square base diamond pyramid. Square base diamond pyramid indenter is used. Square base diamond pyramid indenter is used, same as the Vickers indenter. Therefore, you can draw the side of the indenter will be looking like that. This is the side of the indenter. Right? Now, for the indenter, as usual, you can show the inclined angle between the opposite slant surfaces is 136 degrees for the indenter, and here is the work surface that is being tested. Indentation top view will be the form of a square, or slightly oblong. Therefore, if you have two diagonals, this is indentation top view. These two diagonals are again D1 and D2. They are the diagonals of indentation as referred in Vickers hardness test, right? As referred in Vickers hardness test. And the load that is to be employed here, load that is to be used here is 1 gram to 1000 grams. 1 gram to 1000 grams is the load, right? And there are no formulae. For hardness calculation in this test. But what exactly happens, sir? That how do you find out hardness? Hardness is found out as a diode reading, which is delivered by an automated software. So our automated software directly gives you a diode reading. There are no calculations that are involved here, no formulae. So automated software gives directly gives hardness value. Hardness value is directly given by automated software here. Now, there will be always some questions on this test, the Tucan hardness test. The questions will be normally on what are the applications, for what purposes the Tucan test is going to be employed. So we write here, note, the Tucan test is used for thin sheet materials, hardness testing of thin sheet materials, plated layers, thin sheet materials, plated layers, nitrated surfaces, hardness find out करने के लिए, और individual phases. These are the general applications of the so-called loop hardness test. All right. Coming again, after the Tucan hardness test, we are left with one more indentation hardness test. But indentation hardness test is being addressed here as durometer. Number 6 is durometer. We don't do this in our mechanical engineering practice, but you need to have some information about this. That's the reason why I am giving this information. That is
It makes use of conical stainless steel indenter. Conical stainless steel indenter is used. Conical stainless steel indenter. Conical stainless steel indenter is used. With the durometer, right? Normally, therefore, if you see the side view of indenter, the side view of indenter would look like this. It's a cone. This is indenter, and here is the work surface, right? So, top view of indentation will be obviously in the form of a circle. Top view of indentation will be in the form of a circle. Then there are no formulas here again. Direct reading, direct dial reading, direct dial reading gives the value of hardness. Direct dial reading gives the value of hardness. There are no formulas, no calculations. And mostly, the questions which are coming on durometer are asking repeatedly for what application durometer is used. That is what I am writing here. Note, it is used for hardness testing of plastics and rubbers. It is used for hardness testing of plastics and rubbers. Plastics and rubbers. Alright, it is used for hardness testing of plastics and rubbers. That is the durometer instrument. So friends, so far as our indentation hardness tests are concerned, we have completed all the indentation hardness tests. Clear? Our meter. Alright. It is used for hardness testing of plastics and rubbers. That is the durometer instrument. So friends, so far as our indentation hardness tests are concerned, we have completed all the indentation hardness tests. Brilliant? Because Rockwell and then no hardness test, Yukon hardness test, followed by durometer. Now comes another separate type of hardness test. What are they, sir? Friends, we are going to talk about
short syllabus scope and most hardness testing. Indentation hardness tests are over. This short syllabus scope is also called as the rebound hardness testing. It measures hardness on the basis of resistance to elastic deformation. So let me write certain points related to this. Right. That is short syllabus scope. Next. And writing them separately. Short syllabus scope is also called as the rebound hardness testing. Is also called as the rebound hardness test. So we write here one or two important points. Anyway, we like this. That hardness is measured. Hardness is measured on the basis of hardness is measured on the basis of resistance to elastic deformation. Resistance to elastic deformation. Resistance to elastic deformation. This is what is called as elastic rebounds. Elastic rebounds. Okay. And that is the reason why we call it rebound hardness test. Friends, let me tell you like this. Suppose we make use of a rubber ball, for example. We throw a rubber ball to the floor. When it hits the floor, it rebounds. Correct? Now, if the floor is, now depending upon the floor material, the height of rebounds will vary for the ball. Now, for example, I take a wooden platform, so I throw the ball on the wooden platform. The height of rebounds is something. Right? I keep a glass plate, onto that I throw the rubber ball. The height of rebounds will be different. Number 3, I keep a ceramic floor and try to throw the rubber ball. The height of rebounds will be different. As a total the reason is the amount of elastic deformation undergone by the particular workpiece material is different. Now, soften the workpiece material, right? Smaller will be the height of rebounds. If the test surface is very hard and it is not undergoing any elastic deformation, the ball will be rebounds to a great height. So, greater the height of rebounds, more is the hardness of the test surface. Smaller the height of rebounds, lower is the hardness of the test surface. Right? Greater the height of rebounds, more is the hardness. Smaller the height of rebounds, smaller is the hardness. Therefore, you need to go for calibration. By using calibration, you can convert this height of rebounds of the indenter into actual hardness values. That is what is done in the so-called short syllabus scope. So here also we are going to make use of indenter. The indenter is a diamond tipped indenter. Diamond tipped indenter is used. Diamond tipped indenter. Diamond tipped indenter. Its weight will be around 25 grams. Its weight will be around 25 grams. Diamond tipped indenter having a weight of 25 grams is used. Right. Next, it is a portable instrument. It is a portable instrument. Portable instrument. It is a portable instrument for hardness testing of. It is a portable instrument for hardness testing of heavy objects. Heavy objects. It is a portable instrument for hardness testing of heavy objects. Suppose you are having large size components whose hardness is to be tested. The component is so huge that it cannot be directly lifted and kept on middle hardness tester or little hardness tester. You cannot carry the component to a hardness tester. Then what do? Don't carry the component to the tester. Instead, bring the tester to the component. In such a case, what is called portable tester. So this is a portable tester. How is the testing going to be done, sir? Let me show you here, friends. The schematic. Suppose this is a heavy casting whose hardness is to be tested. Now this short syllabus scope immediately consists of a glass tube. This is a glass tube which is graduated. This is a glass tube that is graduated with readings to read the height of rebounds. Now you are going to use of a diamond tipped indenter. Let me say here is the diamond tipped indenter being allowed to fall under the influence of gravity. This is the diamond tip. This is indenter, right? Whose weight is 25 grams. Now this is the portable instrument. This is what is called as short syllabus scope. This is the short syllabus scope. The white color portion is the short syllabus scope. This yellow color part is the heavy casting. Now allow this indenter to freely fall under the influence of gravity. When it strikes against the test surface, based on the hardness of the test surface, it will rebound. So on the graduated glass tube, the height of rebounds of this indenter is read here. Now using some calibration charts, you try to convert this height of rebounds into actual value of hardness. That is how for a heavy object, using this portable instrument, hardness can be. Hello. Thank you for joining.
by using the principle of elastic rebounds. Hence it is called as rebound hardness testing. Right? That is regarding shore scope. Right. Next one is what is called the Mohs scale of hardness. Mohs scale of hardness. Mohs scale of hardness. This is also called as scratch hardness testing. It is also known as scratch hardness testing. Friends, we write here. This test uses resistance to scratching. Resistance to scratching. Resistance to scratching as a measure of hardness. As a measure of hardness. This test uses resistance to scratching as a measure of hardness. Right. Let me initially show you what is called as Mohs scale. What is the meaning of Mohs scale, sir? I am trying to show you here that there are 10 minerals that are being employed in Mohs scale. Each mineral is numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 बोलिए. Numbering कर दिया जाता है हर एक मिनरल को. Position number 1 in Mohs scale is occupied by tau. You need to remember this sequence. Position number 2 is occupied by another mineral gypsum. Position number 3 is occupied by calcite. Position number 4 is occupied by fluorite. Position number 5 is occupied by apatite. Number 5 is given to another mineral apatite. Position number 6 is given to another mineral called orthoclase. Orthoclase. Position number 7 belongs to quartz. Position number 7 belongs to quartz. Position number 8 belongs to topaz. Position number 9 belongs to corundum. And position number 10 belongs to diamond. Position number 10 belongs to diamond. Now friends, what is exactly going to be done here, sir? If my request is, remember them as it is. Remember them as it is. Why, sir? In many competitive examinations, there are asking this type of questions. In Mohs scale, the position of topaz is, so you need to remember that it is 8. Similarly also, in Mohs scale of hardness, the number of quartz is, right? In Mohs scale of hardness, position number 9 stands for which mineral? Corundum. So when they ask this set of questions, you will be able to answer only when you remember this sequence, and kindly don't disturb this sequence. Internationally, this is the type sequence and only one sequence. Everybody follows the same sequence of minerals. So क्या किया जाता है mineral hardness testing? It's called as scratch hardness testing or mineral hardness testing बोल के भी बोलते हैं. चलो, suppose this is the box of papers whose hardness is to be tested. एक नया वाला काम पड़ रहा है मेरे सामने hardness testing करने के लिए. तो मैं क्या करता हूँ? मेरे पास एक box रहता है. ये box will be there which contains all these minerals with all these numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 10. 10 minerals रहता है. They are all numbered 1 to 10. So when you see this sequence, you need to understand that as you go from 1 to 2 to 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hardness of the mineral keeps on increasing. So these 10 minerals are so arranged that their hardness keeps on increasing. Now like my pen, for example, the mineral tips are arranged in the adapters. So when a new workpiece comes, your testing always begins with 1, with the number 1 mineral. Scratch on the surface of the workpiece. Just check, are you able to scratch it or not? When can you scratch? You can make a scratch only if the workpiece hardness is less than that of the mineral. Correct? So let's say for example, we are trying with 1 tau. No, scratch is not made. Then keep that 1 aside in the box in its correct position and then use gypsum. Number 2, scratch. No scratch will be made. Replace it back into its position in the box. Go with number 3, scratch. No scratch is made. Go with 4, 5. In the same sequence जाना है बेटा. उसी sequence में जाना है. Yes. अब all that. तो यही कर. No scratch is made. Then with the 9, when you try it, scratch is made. With up to 8, no scratch is made. But with the 9, a scratch is made on workpiece. It means what? Workpiece hardness is more than that of 8, but less than that of 9. Yes or no? So you should keep scratching with these numbers one after another until you are successful in making a scratch on the work surface. Now, एक बार scratch बनते हैं क्या समझ सकते हैं? Suppose with the 9, you are able to scratch. Up to 8, no scratch will be made. It means workpiece hardness is between 8 and 9. That is how hardness is declared. Friends, this particular test practice is employed for identification of minerals in mineralogy laboratory. We don't use it in mechanical engineering practice, but this is extensively employed by civil engineers and geologists in mineralogy laboratory for identification of minerals. So write down. This test is extensively used. This test is extensively used for identification of minerals. Identification of minerals. Identification of minerals. Hence it is called as mineral hardness testing. Mineral hardness test. It is called as mineral hardness test. It's not used for metallic materials in mechanical engineering practice. It is used for identification of minerals in the civil engineering mineralogy laboratory. All right. Right.
Once this hardness testing is completed, right, our next task is that we have to take care of what is called as impact test. All right, impact test के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ. Up now, we have gone through indentation hardness test, 6 types of indentation hardness test. Then we have seen show seroscope, resistance to elastic deformation is used as a measure of hardness. Then we have seen Mohs scale of hardness, in which resistance to scratching is used as index of hardness. So जब भी लोग पूछते हैं एग्जाम्स में how do you define hardness, you have freedom. You should. अरे पप्पा उनको खाना ला के दो, मम्मी को बोल दो. Then we have seen Mohs scale of hardness, in which resistance to scratching is used as index of hardness. So जब भी लोग पूछते हैं एग्जाम्स में how do you define hardness, you have freedom. You should define hardness in these three ways: resistance to elastic deformation, resistance to permanent deformation surface, resistance to scratching. इतने सारे रास्ते हैं हार्डनेस का डेफिनेशन देने के लिए. बट व्हेन यू गिव द हार्डनेस डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग, याद में रखो बेटा, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इनवेरिएबली ऑन मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस. सो यू शुड बी थरो विद दिस सीक्वेंस. ये सारे डेटा तुम्हारा याद में रहना है इसी सीक्वेंस में. राइट, नेक्स्ट सर, impact test. Come on, impact test. We write here objectives of impact tests are twofold. Number one, to examine the susceptibility of materials to brittle fracture, at low temperatures, high strain rates, and in the presence of surface notches. Now coming across this, friends, this particular aspect, this impact test, you need to understand that impact specimens are always provided with surface notches. So in interviews they ask you, why is it that all impact specimens are provided, all impact tests are conducted in the presence of surface notches? This is the question asked in interviews. बेटा क्या बोलना है? ये वाला ऑब्जेक्टिव नजर से निकल जाना नहीं. बोलो बेटा, सर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट is provided in object. Coming across this impact test, you need to understand that impact specimens are always provided with surface notches. So in interviews they ask you, why is it that all impact specimens are they ask you, why is it that all impact specimens are provided all impact tests are conducted in the presence of surface notches? This is the question asked in the interviews. बेटा क्या बोलना है?
ये वाला ऑब्जेक्टिव नजर से निकल जाना नहीं। बोलो बेटा, सर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट इज टू फाइंड आउट द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू ब्रिटल। चल इन द प्रेजेंस ऑफ सरफेस नॉचेस, इसी के बाद से हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर कंडक्टिंग इंपैक्ट टेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सरफेस नॉचेस एंड रिमेंबर ऑल प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स विल हैव नॉचेस। देयरफॉर हम लोग क्या करना चाहते हैं? will have notches. All क्या कर रहा है? We are conducting impact test in the presence of surface notches. And remember, all practically manufactured materials will have notches. Therefore हम लोग क्या करना चाहते हैं? We want to make testing on materials under realistically simulated conditions. What is that? Under real conditions, under real manufacturing conditions, every manufactured material will have notches. इसी के वास्ते हम लोग in the presence of notches we are going to conduct impact. Next, बेटा ऑलरेडी पढ़ लिया है, ductile brittle transition conditions में पढ़ लिया. In the presence of surface notches at high strain range, at low temperatures, even originally ductile materials will transform to brittle nature. बेटा ये बात साबित करने के लिए ये वाला टेस्ट बनाया गया है. That is the objective number 1. Next, objective number 2 is more specifically, this test determines impact toughness. This test determines impact toughness of material. This test determines impact toughness of a test material and its ductile to brittle transition temperature. Its ductile to brittle transition temperature. Its ductile to brittle transition temperature. These are the specific objectives. Now, with these specific objectives in mind, we make use of certain specimens. Let me write those details here. Specimen geometry. Specimen geometry. In impact test will be a square rod is used as a specimen. A square rod. Specimen is made in the form of a square rod of cross-sectional area equal to 10 mm by 10 mm. There are two basic standard specimens. We call them as chart piece specimen and ISOD specimen. बोलते हैं दो तरह का standard specimen है. Chart piece specimen and ISOD specimen are the two standard specimens that are employed for impact test. If you use ISOD specimen, the test is called ISOD test. If you use chart piece specimen, the test is known as chart piece test. The geometry of these two test specimens is slightly different. Chart piece test specimen overall length is 55 millimeters. Chart piece specimen overall length is 55 millimeters. Out of this 55 millimeters of specimen, let us say the specimen is supported at the two ends on two supports in the form of horizontal simply supported beam. These are the two supports at the two ends. The distance between these two supports is generally 40 millimeters for ISOD specimen. The ISOD specimen will have a notch in the center. The ISOD specimen will have a notch in the center, a V notch in the center. So let me show you that. In the center, there will be a V notch. This is how the notch is made in the center. And this specimen will be loaded from the back side by application of impact load. Capital T stands for impact load. Sharp piece specimen is positioned like a horizontal simply supported beam. The impact load is applied on the back side of the notch, whereas specimen geometry overall length is 6 equal to a square rod of cross-sectional area equal to 10 mm by 10 mm. There are two basic standard specimens. We call them as chart piece specimen and ISOD specimen बोलते हैं.
दो तरह का स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है, टॉप स्पेसिमेन and IZOD specimen are the two standard specimens that are employed for impact test. If you use IZOD specimen, the test is called IZOD test. If you use Chalky specimen, the test is known as Chalky test. The geometry of these two test specimens is slightly different. Chalky test specimen, overall length is 55 millimeters. Chalky specimen overall length is 55 millimeters. Out of this 55 millimeters of the specimen, let us say, the specimen is supported at two ends on two supports in the form of horizontal simply supported beam. These are the two supports at the two ends. The distance between these two supports is generally 40 millimeters for IZOD specimen. The IZOD specimen will have a notch in the center. The IZOD specimen will have a notch in the center, a V notch in the center. So let me show you that. In the center, there will be a V notch. This is how the notch is made in the center. And this specimen will be loaded from the back side by application of impact load. Capital P stands for impact load. Chalky specimen is positioned like a horizontal simply supported beam. The impact load is applied on the back side of the notch. Whereas if you examine IZOD specimen is a long specimen compared to Chalky specimen. IZOD specimen is a bigger specimen relatively. The overall length of this specimen is 75 millimeters. Overall length of the specimen is 75 millimeters. Out of this 75 millimeters, let me tell you that 47 millimeters depth of the specimen is held inside a fixture. So whatever I am showing in the form with the hatching lines, whatever I am showing with the hatching lines, can be understood as a fixture. The height of this fixture is 47 millimeters. So after 47 millimeters depth, the specimen is inside the fixture, and only remaining 28 millimeters is outside the fixture surface. Only remaining 28 millimeters is outside the fixture surface. Now this IZOD specimen also has a notch in the here. Let me show you here. The position of the notch is such that the notch tip will be at the level of the fixture surface. Okay? Now impact load is applied. Impact load is applied from the front side of the notch. This is the impact load applied on the specimen from the front side of the notch. The impact load is applied, let us say, at a distance of 22 millimeters above the fixture surface. Above the fixture surface. That is how the two specimens are being shown here. So if you make use of IZOD specimen, the test is called IZOD test. If you make use of Chalky specimen, the test is called as Chalky test. Chalky specimen is positioned like a horizontal simply supported beam. It's a short specimen. IZOD specimen is a long specimen, and IZOD specimen is positioned in the fixture like a vertical cantilever. The load is applied from the front side of the notch in IZOD test. Now keep these points in your mind. Within 15 minutes, we'll be reporting back from the so-called dinner break. 15 minutes, you are receiving the dinner break now. So please kindly complete your dinner and get back in 15 minutes.
And confident purposes. आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। राजेश वानखेड़े जी का विशेष धन्यवाद। सोमान शेखर जी, अग्रवाल जी, मंच पे उपस्थित सभी बंधुओं का, और उससे ज़्यादा आप सबका धन्यवाद क्योंकि फेसबुक में आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं। एक तो स्कूल के बच्चों को तो ज़बरदस्ती भी पढ़ाया जा सकता है, तो बहुत का दबाव भी आपके ऊपर हो। आप दबाव में बैठे हैं या खुश होकर बैठे हैं? खुश होकर बैठे हैं। क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो हमें भी ऐसे दिखाते थे स्कूल में कभी कभी, और जब कोई बोलने आता था तो हमारे मन में भाव आता था कि जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि धूप बहुत चुभती थी, परेशान करती थी। तो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बोलने का व्यस्त हूँ, 1-2 घंटे पर मैं बहुत कम बोलूँगा ताकि आप लोग उतना धूप में परेशान ना हो और जल्दी उठ सके यहाँ से। करीब 10 दिन पहले हमारे पास दिल्ली में फ़ोन आया कि 7 नवंबर को यहाँ एक विशेष कार्यक्रम होता है। मुझे सबसे अच्छा लगता है वहाँ जाना जहाँ किसी महापुरुष का जन्म हुआ हो, मृत्यु हुई हो, उसकी यादें जुड़ी हो। और जब मुझे पता लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म यहाँ हुआ, आज पता लगा उनकी अस्थियां भी यहाँ पर हैं, तो मैं अक्सर भारत में और दुनिया के सभी क्षेत्रों में घूमता हूँ और ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करता हूँ जहाँ ऐसी स्मृतियाँ हों। भारत के विभिन्न नेता, चाहे महात्मा गांधी हों या और नेता उस समय के हों, उन सभी के जन्म स्थान, शहादत स्थल, वो सब मैंने देखे हैं। कई कई घंटे वहाँ बैठा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर मेरे नज़र में एक अत्यंत महान नेता हैं। उनको मैं अब्राहम लिंकन के बराबर समझता हूँ। अब्राहम लिंकन ना होते, आज जैसा अमेरिका हमें दिखता है वैसा अमेरिका ना होता अगर अब्राहम लिंकन अपने जीवन का बलिदान न करते। 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ, या कह सकते हैं 1787 के आसपास जो संविधान पूरा लिखा गया। लेकिन वहाँ आज़ादी मिलने के बाद भी जो वहाँ के दास थे, स्लेव्स थे, उनको आज़ादी नहीं मिली। उनकी आज़ादी लगभग 90 साल के बाद हुई, 1860 के दशक में हुई। एक लंबा संघर्ष हुआ, और उस लंबे संघर्ष में जिस व्यक्ति ने एड़ी चोटी का जोर लगाया उसका नाम अब्राहम लिंकन था। लिंकन के खिलाफ अमेरिका के बहुत सारे लोग थे, पर वो अड़ गया, और अंत में उसने संविधान में संशोधन करवा के, जिसको हम अमेरिकी संविधान का 13th अमेंडमेंट कहते हैं, पारित करवाया, और जिसके बाद से वहाँ दास व्यवस्था समाप्त हुई। उसकी कीमत यह है कि उसके कुछ ही समय के बाद अब्राहम लिंकन की हत्या हुई, लेकिन वो अपने जीवन की बलि देकर कम से कम अमेरिकी समाज के बहुत बड़े हिस्से को आज़ाद करवा दी थी। अम्बेडकर जी कहते थे कि जिंदगी बहुत लंबी होने का मतलब नहीं, जिंदगी महान होनी चाहिए, और महान जीवन का मतलब ये होता है कि सफल होना तो बहुत छोटी बात है। डॉक्टर अम्बेडकर हमारी संविधान सभा के वो मेंबर थे जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने PhD भी 3 करोड़ की हो और चौथी बार में और उनको मिल गई। पूरी संविधान सभा में हमें इतना वेल रेड, इतना पढ़े का व्यक्ति नजर नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान सभा में उनकी भूमिका बहुत छोटी सी थी, नगण्य थी, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा नहीं था, उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। ये बात ठीक है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान सभा के एक मेंबर थे टी कृष्णाचार्य, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे, जिनमें से एक ने ज्वाइन ही नहीं किया, एक बीमार पड़ गए, 2 दिल्ली के बाहर थे, एक देश के बाहर चले गए, एक ने इस्तीफा दिया तब दूसरे मेंबर को लेकर आए। और कहने को 7 मेंबर से, लेकिन दरअसल केवल एक व्यक्ति के हाथ में ड्राफ्टिंग की सारी जिम्मेदारी आई, और ये कथन टी कृष्णाचार्य ने संविधान सभा के भीतर दिया, और इसलिए हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप में से अधिकांश बच्चे जिस सामाजिक परिवेश में,
मैं संयोग से समाज के उस परिवेश से हूँ जिसमें सामाजिक विषमताओं को झेला नहीं। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो निम्न जाति का नहीं है, तो मैं सवर्ण समाज से हूँ। संयोग की बात है, तुक्के की बात है। किसी का तुक्का कुछ लगता है, किसी का कुछ लगता है, तो मैं तुक्के से उस समाज से हूँ जहाँ जातीय भेदभाव झेलना नहीं पड़ता है। मैं बहुत गरीब भी नहीं रहा, मेरे माता पिता अध्यापक थे, तो वेतन भी ठीक ही था। और इसलिए मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में सामान्यतः एक राय ऐसी बन गई, डॉक्टर अम्बेडकर केवल दलित समाज के नेता हैं, उन्होंने केवल उनके लिए कुछ महान काम किए। और मेरा मानना है कि इस गलतफहमी से हमारे समाज को बचना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर हमारे देश के आज तक के सबसे महान नेताओं में से एक हैं और उनकी महानता को हमें स्वीकार करना चाहिए। धूप बहुत ज्यादा है, आपकी उम्र भी बहुत कम है, इसलिए मैं गहरी बातों में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर कुछ बहुत गहरे विवाद, गहरे संवाद हो सकते हैं। उनका गांधी जी से क्या रिश्ता था, आज़ादी के आंदोलन से उनका क्या रिश्ता था, मार्क्सवाद से क्या रिश्ता था, बौद्ध धर्म से उनका क्या रिश्ता था, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम कई घंटे गहरी बात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप अभी स्कूल वाले बच्चे हैं, ज़्यादातर आपके लिए इन विवादों में भी उलझना ठीक नहीं है। आपके लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं उस बात पे आता हूँ। मैंने पिछले 1 साल में जो यात्राएं की, उसमें एक यात्रा कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क की, और वहाँ जाते ही मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ते थे, कोई ऐसा मेमोरियल उनका है क्या? तो वो मुझे एक लाइब्रेरी में, जो बेसमेंट में ऐसी लाइब्रेरी, काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी, वहाँ लेके गए। और लाइब्रेरी में एक दरवाज़ा जहाँ अंदर रीडिंग रूम है, उसके बाहर एक बहुत सुंदर प्रतिमा उनकी लगी हुई है और साथ में काफ़ी उनके बारे में लिखा हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोलंबिया विश्वविद्यालय आज भी ये मानता है कि डॉक्टर अम्बेडकर उनके आज तक के सबसे शानदार विद्यार्थियों में से एक थे। फिर उसी के कुछ दिन बाद मैं लंदन में था, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहाँ से पास ही था, करीब 2-3 किलोमीटर दूर था। संडे का दिन था, तो मैं घूमते घूमते वहाँ चला गया, बंद था वो। तो मैंने वहाँ उनके जो स्टाफ के मेंबर थे उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं अंदर केवल घूम सकता हूँ थोड़ा सा? तो वो यहाँ घूम लीजिए। और जब मैं घूमने गया तो मैंने देखा कि बिल्डिंग में अंदर घुसने से पहले ही बाहर उन्होंने एक ही प्रतिमा लगाई है, और डॉक्टर अम्बेडकर की ही प्रतिमा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भारतीय सपूत की ख्याति दुनिया में इतनी ज़्यादा है, अमेरिका में, लंदन में जहाँ वो पढ़े, वहाँ के इंस्टीट्यूशन से मानते हैं कि हमारे महानतम विद्यार्थियों में से एक वो थे, तो ऐसा क्यों है कि हमारे समाज में उनको लेकर ऐसी गलतफहमियां बहुत ज़्यादा है? आज मुझे बुलाया गया है ये कह के कि बच्चों को प्रेरणा देंगे, तो दरअसल मेरे लिए तो खुद ये प्रेरणा का समय है कि मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ मैं बहुत संक्षेप में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जिस समाज में पैदा हुए होंगे, आपकी परिस्थितियाँ कुछ वैसी होंगी जैसी अम्बेडकर जी की थी। हालांकि वैसी नहीं होंगी, और क्यों नहीं होंगी? क्योंकि अम्बेडकर जी हो गए आपसे पहले, इसलिए आपकी स्थितियाँ वैसी नहीं। अगर वो ना होते तो स्थितियाँ वैसी हो। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि आप किस भारत की ऐतिहासिक सामाजिक परंपरा में स्थित हैं और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। मैं ये भी समझाना चाह रहा हूँ कि जो सदस्य आप में से या समाज के जो सुनेंगे इस वक्तव्य को, जो समाज के उस तबके से नहीं भी हैं, जो समाज के संपन्न वर्ग से हैं, उनको भी समझने की जरूरत है, जो हम थोड़ा सा समझेंगे। क्या है वो? हमें किसी व्यक्ति की महानता समझने के लिए पहले ही देखना चाहिए कि उसकी प्रेरणा बिंदु क्या थे। आपको मैं प्रेरित करूं, इससे बेहतर है कि मैं आपको वही बताऊं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। शायद आपको भी किसी से प्रेरणा मिल रही है। और मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी विचारधारा, किसी मान्यता, किसी बात का अंध समर्थक नहीं। मैं ना गांधीवादी हूँ, ना मार्क्सवादी हूँ, ना अम्बेडकरवादी हूँ। मैं सभी महान व्यक्तियों को पढ़ता हूँ, डूब के पढ़ता हूँ। अम्बेडकर जी जितना पढ़ते थे उतना नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन तब भी काफी पढ़ता हूँ। उनके बारे में तो एक ऐसी बात मैंने सुनी, आप बार बार ताली मत बताइए, उससे रिदम टूट जाएगी, ताली एक बार बजा दीजिएगा बाद में, है ना? अभी सुन लीजिए। मैं कल जब इंदौर आ रहा था, फ्लाइट में था, तो मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड किए हुए थे अम्बेडकर जी के बारे में, ये सोच के कुछ नया पढ़ने को मिले, कुछ नया सुनने को मिले, तो मुझे भी तो प्रेरणा मिले। तो एक जिक्र मैंने सुना। आप लोग धूप से परेशान तो नहीं हो रहे थे? वैसे भी धूप मेरी तरफ ज्यादा है, आपकी तरफ तो कम है, तो है ना? तो अगर मैं बोल सकता हूँ तो आप सुन भी सकते हैं, ऐसा क्या है। और आप बैठे, मैं खड़ा हूँ, तो आपको तो ज्यादा। तो मैंने कहा एक बड़ा अच्छा जिक्र सुना। वो जिक्र एक विदेशी लेखक जिन्होंने किताब लिखी इनसाइड एशिया, ये 19 मतलब अमेरिका के समकालीन लेखक थे, जिनका नाम था जॉन गुंटर, बड़े प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने लिखा कि मैं 1938 में एक बार डॉक्टर अम्बेडकर के घर गया और मैं दंग रह गया उनकी लाइब्रेरी में किताबें गिनने लगा। तो उसके बाद पता लगा कि उनके पास उस समय 8000 किताबें थी। तारीख नहीं सुनना है, केवल सुनना है। 8000 किताबें थी।
और जिस दिन डॉक्टर अम्बेडकर की 1956 में 6 दिसंबर को मृत्यु हुई, मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा उनका प्रशंसक हूँ, उस दिन उनके पास 35,000 किताबें थी। मैंने अरस्तु के बारे में सुना है, जो ग्रीक फिलोसफी का सबसे महान चिंतक है, सबसे महान चिंतकों में से एक हुआ। उसने अपने जीवन में 3,000 पुस्तकें लिखी। हालांकि वो अधिकांश पुस्तकें बहुत छोटी हैं, 2 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5 पृष्ठ की हैं। मैं दंग रह जाता हूँ। मेरे पास डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा साहित्य है, वो 21 किताबों में आता है। और जब मैं उसको उठा के 5-7 दिन पहले जब पता लगा यहाँ है, तो मुझे लगा मैं एक बार रेफरेंस के तौर पर फिर से देख लूँ। इतना मोटा बंडल है उन किताबों का जो डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल अपने 65 साल के जीवन में लिखी। उनको समय कम मिला। ये ईश्वर या नियति की क्रूरता है कि उनको समय कम मिला। अगर उनको 10-15 साल और मिल जाते तो निस्संदेह हमारा देश जैसा है उससे बहुत बेहतर होता। लेकिन नियति का मामला है। मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में बहुत लोग उनका विरोध करते हैं। उनको लगता है कि ये दलितों का नेता है, ये हिंदू धर्म के बहुत खिलाफ था, ये बहुत नाराज रहता था। लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों को, उस बैकग्राउंड को देखा नहीं जो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आपने सुना होगा जरूर, नहीं सुना बात सुन लीजिए और फिर तुलना कीजिए कि आज आप जहाँ हैं क्यों वहाँ हैं। अगर अम्बेडकर साहब ना होते या ज्योतिबा फुले ना होते, उसके 500 साल पहले कबीरदास ना होते, उसके 2000 साल पहले बुद्ध ना होते, तो दरअसल हम वहाँ नहीं होते जहाँ बैठे। क्या उन्होंने क्या झेला अम्बेडकर जी ने? क्योंकि आप बच्चे हैं, इसलिए मैं वही चीजें बताऊंगा जो आपको थोड़ा सुन के समझ में आएंगे, प्रेरणा मिलेगी। जब वो 6 साल के हुए, यही पैदा हुए, यही उनका घर है, मुझे बताया गया इसी घर में उनका जन्म हुआ। आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ आते हैं। मैं तो पहली बार जीवन में आया। कुछ दिन पहले इंदौर पहली बार मैं आया था, 1 साल पहले। मुझे ये नहीं पता था कि इतना पास में वो जगह है, वरना मैं उसी दिन आता। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इंदौर तक आया भी और मुझे पता नहीं चला। तो जब वो पैदा हुए इसी जगह, क्योंकि उनका सौभाग्य था कि वो एक सूबेदार के बेटे थे, इसी सेना में काम करने वाले। मुझे आज पता लगा कि MHOW क्यों कहते हैं, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार उसका नाम था। मैं परेशान था कि महू की स्पेलिंग MAHU क्यों नहीं है, MHOW क्यों है। तो आज पता लगा नहीं, वो एक एक्रोनिम है, उसकी फुल फॉर्म एक है। वो जिस समाज में थे, उस समाज के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पर क्योंकि वो सूबेदार के बेटे थे, और सूबेदार एक कमीशन पद होता है सेना में, बड़ा पद होता है, तो इतना हो गया कि उनको स्कूल जाने का मौका मिल गया। पर उनकी माँ को, आदरणीय भीमाबाई जी को अच्छे से पता था कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो उससे सब बहुत बुरा बर्ताव होगा, जिसको आपकी भाषा में बुलिंग कहते हैं, आजकल के बच्चों की भाषा में बुलिंग कहते हैं। उसका खतरा था। माताओं को, पिताओं को बहुत चिंता होती है कि हमारे बच्चे के साथ स्कूल में ज्यादती ना हो, बदतमीजी ना हो। कल को आप भी पेरेंट्स बनेंगे, आप भी इस दर से गुजरेंगे। ऐसे कई बच्चे होते हैं, कोई फिजिकली उतना ठीक नहीं है, कोई मेंटली उतना ठीक नहीं है। जब वो स्कूल जाते हैं बच्चे, एक तो पहले वो पीड़ित हैं, उसके बाद स्कूल के बाकी बच्चे उनका मजाक बनाते हैं, चिढ़ाते हैं। पेरेंट्स को इतना दर्द होता है इस बात से, लेकिन क्या करें। तो उनकी माता जी ने, भीमाबाई जी ने कहा कि देख बेटा, स्कूल जा रहा है, पहले समझा रही हूँ, बहुत बुरे अनुभव होंगे, लड़ना मत, झगड़ना मत, विद्रोह करके छोड़ मत देना, क्योंकि पढ़ाई करोगे वो अकेला रास्ता है कि कुछ बड़ा कर पाओगे जीवन में, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं। इस बात को उस छोटे से बच्चे को मन में बिठा लिया। वो स्कूल गया। उस स्कूल में पहली बार कोई ऐसा बच्चा आया था जो समाज के अछूत कहे जाने वाले समुदाय का हिस्सा था। जो बाकी बच्चे थे बुरे नहीं थे, पर वो भी अपने अपने घर से सीख रहे थे, अपने समाज से सीख रहे थे। तो उनको ये पता था कि ऐसे बच्चों के साथ नहीं बैठना है, दूर रहना है। तो व्यवस्था हुई कि वो स्कूल में क्लास के सबसे अंत में, जहाँ सारे बच्चों के जूते चप्पल रखे हैं, उसके पड़ोस में एक दरी छोटी सी बिछा के बैठेंगे और दरी भी खुद लेके आएंगे, ताकि स्कूल में कोई और व्यक्ति अपवित्र ना हो। अब सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए उस बच्चे की हालत कि एक बच्चा है, अपने घर से दरी लेके आता है, क्लास के अंत में जहाँ जूते चप्पल रखे उसके पास में बिछाता है, बैठता है, बाद में लेके जाता है। उसके साथ कोई खाना भी नहीं खाता है, तो वो दीवार की तरफ चेहरा करके अपना भोजन करता है जो घर से लेके आया था। उसको पानी पीने की अनुमति नहीं है। आपने ये सब नहीं झेला होगा। उस बच्चे का सोचिए, ये आपसे केवल और केवल 110 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं है, 115 साल पहले की बात। उस बच्चे को पानी पीना है और स्कूल में पानी की एक ही व्यवस्था है कि जो पानी का नल है या घड़ा है उसे वो नहीं छू सकता। तो चपरासी है जो उसको दूर से पानी देगा तो वो पिएगा, वो घड़ा नहीं छू सकता है। और ये बात कोई और नहीं कह रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है। वो उस समय छप नहीं पाई थी, छपी 1990 के आसपास है। अंग्रेजी में उस आत्मकथा के कुल 6 अध्याय हैं। उसका नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा, योनी की पुस्तक है। उसमें केवल 6 अध्याय हैं, जिनमें से 4 अध्याय में उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं और 2 में बाकियों के अनुभव बताए हैं। और जो पहला अनुभव है वो यही अनुभव है। और वो साफ लिखते हैं कि अगर इस दिन, बच्चों अभी मैं जानता हूँ बहुत
बेचैन हो गए, शरारत करने का मन भी होगा, लेकिन जिनकी बात चल रही है ना उनके सम्मान में थोड़ा शांत रहें और सुने, है ना, समझें। चंचलता इस उम्र में होती है कि थोड़ा सुन लीजिए, क्या होगा, फायदा हो जाएगा, कुछ नया सीखोगे, है ना। आपकी उम्र से बहुत पहले अम्बेडकर जी बहुत सीरियस हो गए थे, इसलिए वो अम्बेडकर जी, तो अब तो सीरियस हो ही जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति की बात चल रही है उसका कितना एहसान है हम पे, आपके समाज में विशेष रूप से, ये समझना चाहिए। जिस दिन चपरासी नहीं आएगा उस दिन पानी नहीं पी सकते हैं। उन्होंने एक वाक्य लिखा अपनी आत्मकथा में, नो पियम नो वाटर। उस समय ऐसी बोतलें नहीं होती थी जो भी आपको बढ़ रही थी, उस जमाने में नहीं होती थी। उस जमाने में पियर नहीं आता था तो पानी नहीं मिलता था। उनके नंबर बहुत अच्छा है क्लास में, व्यवस्था थी कि जिसके नंबर जितने अच्छे होंगे वो उतना आगे बैठेगा, पर उनको ये ऑप्शन नहीं था कि वो आगे बैठ सके, उन्हें पीछे बैठना था। ये सब झेलते झेलते वो पढ़े। जब 10वीं क्लास में आए तो एक अध्यापक उनके थे, कृष्णा जी अर्जुन से उसका नाम था उनका। उन्होंने उस बच्चे को, भीमराव को, एक छोटी सी पुस्तक भेंट की जो बुद्ध की जीवनी थी और कहा कि इसको पढ़ो। अम्बेडकर कहते हैं कि उस पुस्तक को और मैं अपने अध्यापक केलुस्कर जी को जिंदगी भर नहीं भूल पाया। वही केलुस्कर जी बाद में उनको बड़ौदा के महाराज सियाजी राव गायकवाड़ से मिलवाने ले गए, वजीफा दिलवाया, फिर वजीफा बढ़ा, और जब वो एल्फिंस्टन कॉलेज के विद्यार्थी हुए तो उनको कोलंबिया विश्वविद्यालय जाने के लिए स्कॉलरशिप मिली, वहीं से मिली, बड़ौदा से मिली। 4 साल कोलंबिया में रहे और इतनी मेहनत करते थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी करने के साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी एमए और पीएचडी कर डाली। और उन्होंने कहा कि मैं भी बाकी विद्यार्थियों की तरह कुछ घंटे पढ़ के बाकी मौज मस्ती कर सकता था, पर मैंने रोज 21 घंटे पढ़ना चुना ताकि मैं वो सारी सीमाएं दूर कर सकूं जो मैंने अपने समाज में देखी है। 17 लोग भारत वापस आए। अब देखिए स्थिति क्या होती है। जब वो भारत आए तो 4 साल अमेरिका में रहे थे, बीच में लंदन में रहे थे, तो उनको बाहर जाती व्यवस्था नहीं थी, वहां कोई छूट नहीं था। वहां भी ब्लैक्स की दिक्कत थी, अश्वेतों की दिक्कत थी, पर क्योंकि वो अश्वेत नहीं थे इसलिए वो दिक्कत उन्होंने नहीं महसूस की। तो उन्होंने 4 साल देखा कि एक समानता का व्यवहार उनके साथ हुआ, तो वो उसकी अगेंस्ट हुए। अब भारत आए, बड़ौदा महाराज के साथ जो सहमति थी वो ये कि जब वो पढ़ के आएंगे तो बड़ौदा सरकार में सिविल सेवक बनेंगे, दीवान बनेंगे। अब सोच के देखिए क्या हुआ। वो व्यक्ति बंबई से बड़ौदा आया, और जब बड़ौदा आया तो उसको लगा कोई तो लेने आएगा, क्योंकि वो महाराज के सिविल सर्वेंट थे। स्टेशन पर कोई लेने नहीं आया उनको, क्योंकि उनका समाज पिछड़ा हुआ था। कोई बात नहीं, उतरे, सोचा कि कहाँ रहूं। उनको अंदाजा था कि जो हिंदू समाज की धर्मशालाएं हैं, होटल से, वहां उनको अनुमति नहीं मिलेगी क्योंकि वो अस्पृश्य माने जाते हैं। तो काफी ढूंढने के बाद उनको एक पारसी धर्मशाला मिली। ये सब बातें अम्बेडकर जी ने अपनी जीवनी में लिखी है, आत्मकथा में, नहीं से बता रहा हूं, उन्हीं की लिखनी है। क्योंकि पारसी धर्म में तो जाति व्यवस्था नहीं है, तो उनको लगा यहाँ शायद शांति मिलेगी। वो पारसी धर्मशाला में गए, वहां कमरा की लिया, एक ही कमरा था, बड़ा बहुत बुरी हालत में कमरा था, फर्नीचर से भरा जैसा कमरा, उसी के कोने में रहने की व्यवस्था हो, तो रहने लगे। कुछ देर के बाद उस धर्मशाला का जो केयर टेकर था वो गुस्से में आया, उसने कहा कि तुम पारसी नहीं हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पारसी नहीं हूँ। तो उन्हें बताया क्यों नहीं, आपने पूछा नहीं, मैं क्यों बताऊं। लेकिन उस धर्मशाला में कई महीनों से शायद कोई आया ही नहीं था, हालत खराब थी। तो फिर सहमति बनी कि यार तुम ना रजिस्टर में कोई पारसी नाम ले दो, मैं मैनेज कर लूंगा, और बोले मुझे कुछ दिन में घर मिल ही जाएगा, मैं फिर वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। तो एक पारसी नाम कुछ रख के काम चलाया। लेकिन 11 दिन हुए थे अभी, और 11वें दिन लगभग 10 से 15 पारसी युवक हथियार, लाठी, डंडे हाथ में लेके चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़े। और तब उन्होंने कहा कि एक अछूत आदमी पारसी धर्मशाला में कैसे आ गया, तुमने हमारी धर्मशाला खराब कर दी। अम्बेडकर जी ने कहा कि आपके धर्म में जाति व्यवस्था है नहीं, वो सब हमें नहीं पता, रहो यहाँ। और खतरा था कि हिंसा हो सकती थी। अंत में तय हुआ कि शाम तक का समय है, छोड़ देना वरना छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर अपने ऑफिस गए, ऑफिस में उनकी कुर्सी अलग बनाई गई। उनका चपरासी उनको पानी इस तरह से देता था कि जैसे किसी खराब व्यक्ति को दे रहा था, फाइलें फेंक के देता था ताकि छू ना ले। आप उस व्यक्ति का मन सोचिए कि जो व्यक्ति इतना पढ़ के आ गया है, अमेरिका से पीएचडी, लंदन से पीएचडी कर चुका है, इकोनॉमिक्स में पहली बार देश में किसी ने इतने गंभीर स्तर पर अध्ययन किया होगा, उसके साथ ये बर्ताव हुआ है। उन्होंने महाराजा के सचिव से बात की, भाई उस गहने को घर कब मिलेगा, छोड़ना है मुझे। कोई जवाब नहीं मिल पाया, शाम तक छोड़ना है। पूरे बड़ौदा में एक भी जगह नहीं है जहां वो रह सके। अंतिम उपाय क्या किया, अपने एक हिंदू दोस्त से बात की कि भाई जो 2 दोस्त उनके बाहर से पढ़ के आए थे,
एक हिंदू एक ईसाई दोनों से बात की। हिंदू दोस्त ने कहा ऐसा है कि ऐसे ऐसे छोड़ना पड़ रहा है राष्ट्रीय धर्मशाला, क्या मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ? बहुत प्रगतिशील व्यक्ति था, पर उसने 2 मिनट चुप होकर बोला कि देख यार, मुझे तो दिक्कत नहीं है, पर मेरे यहाँ जो लोग काम करते हैं ना, वो सब काम छोड़ देंगे, क्योंकि तुम अगर रहोगे तो वो फिर सब खत्म हो जाएगा। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। एक ईसाई दोस्त है, ईसाइयों में तो प्रथा नहीं होती है, उससे पूछा। उसने कहा यार हूँ तो मैं ईसाई, लेकिन कुछ पीढ़ी पहले हम हिंदू थे, तो हमारे परिवार में अभी तक वो संस्कार हैं, और मेरी पत्नी इस बात से भड़क जाएगी कि आपने एक अछूत को अपने घर में से बुला लिया। और तब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, जो हिंदू समाज के लिए अछूत है वो पारसी के लिए भी अछूत है, वो ईसाई के लिए भी अछूत है। और यही मुंबई में सिडनेहम कॉलेज में जब वो प्रोफेसर बन के गए, वहां भी ये बर्ताव हुआ कि उनको पानी पीने की व्यवस्था अलग थी। सिडनेहम कॉलेज जो कि बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है मुंबई का, एक बार घड़ा छू लिया तो घड़े को तोड़ा गया पवित्र करने के लिए, और तब उनको फिर ये लगा कि ये अलग अलग धर्म जो दावा करते हैं कि हम समानता वाले धर्म हैं, उन सब कैसा बर्ताव क्यों है? फिर एक घटना लिखते हैं अम्बेडकर जी अपनी आत्मकथा में। एक बार वो नासिक से औरंगाबाद जा रहे थे निजी यात्रा पे कुछ दोस्तों के साथ। उन्होंने जानबूझ के सबसे कहा किसी को बताना मत, मैं नहीं चाहता किसी को पता लगे, निजी यात्रा रखेंगे। रास्ते में दौलताबाद का किला पड़ा। दौलताबाद का किला ऐतिहासिक स्थल है, उनकी इच्छा हुई देखते हैं उसमें। तो 7-8 दोस्त खूब धूल मिट्टी झेलते हुए वहां पहुंचे, किसी को बताया नहीं था। जब पहुंचे तो वहां एक पानी का हौद था जहां पर लोग हाथ मुंह धो लेते हैं। इन सब ने वहां पर हाथ मुंह धो लिया। इतने में वहां कुछ मुस्लिम युवक गुस्से में आए हथियार लेके। उनको किसी ने बता दिया था कि ये लोग अछूत समुदाय से हैं, और लड़ने लगे उनके साथ। अम्बेडकर जी ने उनको समझाया, मैंने कहा भाई तुम तो मुसलमान हो और तुम्हारा धर्म तो कहते हैं कि हम सब बराबर हैं। वो बोले वो सब बेकार की बात है, तुमने हमारा ये अपवित्र कर दिया है। और हालत ये आ गई कि अम्बेडकर जी को लगा कि अब हिंसा भी हो सकती है और ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। किसी तरह से वहां से जान बचा के, हालांकि बाद में उनको देखने की परमिशन मिली, किला देखा वापस आए, और उस दिन उन्होंने लिखा डायरी में, जो हिंदू पारसी ईसाई के लिए अछूत है वो मुसलमान के लिए भी अछूत है। आप अनुभव सोचिए उस व्यक्ति के जिसको समाज के सब समुदाय गाली दे रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद, जो बड़ौदा के राजा का सैन्य सचिव रह चुका है, जो व्यक्ति सिडनेहम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका है, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस समाज के भीतर हमें एक्सेप्टेंस मिल जाए, हमारे समाज को एक्सेप्टेंस मिल जाए। उनके मन में आता नहीं होगा कि अगर वो वापस चले जाते इंग्लैंड, 1 साल के लिए फिर से गए भी थे, अगर वो चाहते तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुनिया भर के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बन के शानदार जिंदगी गुजार सकते थे। क्या कमी थी उनके जीवन में? और उनको एक बात हमेशा लगती थी कि अगर मेरे समुदाय में संयोग से मैं पढ़ लिख गया हूं, उनके परिवार के 14 बच्चों में वो 14वें बच्चे थे, और उनके खानदान का, उनकी जाति का, समुदाय का पहला बच्चा था जिसने 4वीं क्लास पास की थी। उनको एक ही बात लगती थी कि मैं अपनी जिंदगी तो शानदार बना के गुजार सकता हूँ, बड़ी बात नहीं। और नियति ने, इतिहास ने मुझे एक ऐसा मौका दिया है कि यदि मैं अपने निजी सुख दुख भूल जाऊं और रात दिन 24 घंटे अपने समाज के विकास में ताकत लगा दूं, तो हो सकता है कि मेरी वजह से हजारों, लाखों, करोड़ों उन व्यक्तियों को बेहतर जिंदगी मिले जिनकी जिंदगी मानवीय जिंदगी तो नहीं है, कई मामलों में पशुओं से भी बदतर जिंदगी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बोधिसत्व शब्द है वो दरअसल वैसे ही व्यक्तियों के लिए बना हुआ है। बोधिसत्व क्या होता है? महात्मा बुद्ध के बारे में कहते हैं कि जब उनको मोक्ष मिल गया, बुद्ध मानते थे कि जीते जी भी मोक्ष मिल सकता है। कहते हैं कि उनको मोक्ष मिल गया, और जब उनको मोक्ष मिल गया तो वो मुक्ति में जाके आनंद में रह सकते थे। और उन्होंने कहा कि नहीं, इस समाज में, इस दुनिया में इतने लोग दुखी, इतने लोग परेशान हैं। उनके अंदर बहुत करुणा थी। उनको लगता था कि जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तब तक मैं अकेला मोक्ष लेकर क्या करूं। उन्होंने अपने मोक्ष को स्थगित कर दिया और कहा कि मैं लगातार प्रयास करूंगा कि मेरे साथ साथ सभी को मुक्ति मिले। और तब से बुद्धिज्म में कंसेप्ट आया कि जो व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए अर्ह है, एलिजिबल है, उसके बाद भी मुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि मैं सबको मुक्त करके मुक्त होऊंगा, उसको बोधिसत्व कहते हैं। और इस समाज में यदि कोई सच्चा बोधिसत्व हुआ है तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को ईमानदारी से माना। इतने बुरे अनुभवों से गुजरने के बाद इस व्यक्ति को गुस्सा क्यों नहीं है? इस व्यक्ति के अंदर नफरत पैदा क्यों नहीं? ऐसा ही हुआ था 1848 में ज्योतिराव फुले के साथ। फुले अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए व्यक्ति थे, और जब पढ़ाई खत्म हुई उनकी 1847 में,
1848 में उनके एक मित्र ने, जो कि उच्च जाति का था, कहा कि मेरी शादी है तो मेरी शादी में आना। इनको भी लगा ठीक है चलता हूँ, उसी शादी में चले गए। उस शादी में वो गए और दूल्हे के माता पिता ने जैसे ही देखा कि एक अवर्ण व्यक्ति विवाह में आ गया है, इतना खराब से उनको लताड़ा, इतना अपमान किया। और ज्योतिराव फुले कहते हैं कि वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। मुझे इस अपमान और इस जिल्लत से सिर्फ खुद को नहीं, अपने समाज के हर व्यक्ति को बाहर निकालना था। और इसलिए 1848 में उन्होंने पहली बार लड़कियों का स्कूल खोला, अपनी पत्नी को पढ़ाया, देश के इतिहास में पहली बार लड़कियों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। आज ये जो बच्चियां बैठी हैं, अगर फुले न होते तो आज अब घर के अंदर चौका कर रही होती, चूल्हा चौका कर रही होती, यहाँ न बैठी होती। इसलिए जिन व्यक्तियों की वजह से हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। इतनी खराब परिस्थितियों के बाद जो व्यक्ति इतना आगे बढ़ा, उसने देश के लिए क्या क्या किया, हल्का सा अंदाजा ये भी आपको। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने केवल दलित समाज का कल्याण किया, वो बहुत छोटी बात कहते हैं। वो तो किया ही, उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, उन्होंने पानी को लेकर खूब सत्याग्रह किया, मंदिर प्रवेश को लेकर सत्याग्रह किया। जब उनको लग गया कि सबसे बात नहीं बनेगी, वो नाराज भी हुए। 1927 में उन्होंने मनुस्मृति दहन किया। 1935 में ये वाला घोषणा की कि मैं पैदा हुआ हूँ हिंदू धर्म में, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। महात्मा गांधी ने उनसे निवेदन किया कि ऐसा न करें। उसके बाद 21 साल तक वेट किया ताकि समाज अगर बदल सके तो मुझे इतना बड़ा स्टेप न लेना पड़े। और 1956 में जब उनको लग गया कि मेरी मृत्यु नजदीक है और मैं अपने समुदाय को संशय में, दुविधा में न छोड़ के जाऊं, तो अपनी मृत्यु से केवल 1.5 महीना पहले 14 अक्टूबर के दिन उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये तो एक पक्ष है उनके जीवन का, जो दलित समाज या अछूत समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने किया। उनके जीवन का उससे बड़ा पक्ष जो मेरी नजर में है, वो महिलाओं के बारे में। आपको अंदाजा नहीं होगा शायद, जब भारत का संविधान बना, उन्होंने बहुत जिद की, और ये बात 1935-36 से शुरू हो गई थी, आजादी के बाद से चलती रही, कि महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए और महिलाओं को बराबरी देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना बहुत जरूरी था, जिसको आजकल हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज सरकार कह रही कि हम लेके आएंगे। ये जिद जिस व्यक्ति की थी वो डॉक्टर अम्बेडकर थे। उनको पता था कि जब तक सामाजिक कानून सभी धर्मों में पुरुष और महिला के लिए बराबर नहीं होंगे, तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से करता हूं कि वहां महिलाओं की हालत कैसी। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, वो घर के अंदर बंद है, तो समाज कैसे प्रगति करेगा। वो नेहरू जी से लड़ गए। जिस सरकार में वो कानून मंत्री थे 1946 से 51 के बीच का दौर था, उन्होंने नेहरू जी से, जो प्रधानमंत्री थे, खूब झगड़ा किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लेके आइए। उस समय नेहरू जी का मानना यह था कि 1951 के पहले आम चुनाव होने के बाद, जनता से विश्वास लेने के बाद मैं लेके आऊंगा। और अम्बेडकर साहब ने नाराज होकर इस मुद्दे पर देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और एक भाषण दिया, जिसमें कहा कि नेहरू जी ने अपने वायदे को निभाया नहीं है और महिलाओं की बराबरी के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास कर नहीं रहे। और फिर 1956 में उनकी मृत्यु होने से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, जो हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बड़ा हिस्सा था जो हिंदू समाज के बारे में था, उसको 4 कानूनों के रूप में नेहरू जी ने पारित करवाया, जिसमें से एक हिंदू मैरिज एक्ट है, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट है। और यदि आज हिंदू समाज की महिलाओं को वो सारे अधिकार मिल पाए हैं जो हिंदू पुरुषों को मिलते हैं, तो उसके पीछे जिम्मेदार सबसे बड़ा यदि कोई व्यक्ति है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर है। इसलिए भारत की महिलाओं को, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, मुस्लिम समाज को यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय लागू नहीं करवा पाए वो, अब शायद वो भी होगा। और किसी भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कोई भी समाज, यदि उस समाज की महिलाओं के साथ बराबरी नहीं है, तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून बनाकर बराबरी लाए। और ये विचार मुख्य रूप से अम्बेडकर जी का ही था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। तीसरी बात, लोग कहते हैं कि आज़ादी के संघर्ष में उन्होंने इतना साथ नहीं दिया। ठीक बात है, उनकी अपनी प्राथमिकताएं थी। 1942 से 46 तक जब स्वाधीनता संग्राम एकदम चरम स्तर पर था, वो वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री थे या श्रम विभाग के प्रमुख थे। आज हम कहते हैं कि भारत में जो श्रम सुधार है, श्रम सुधार का मतलब किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर रखेंगे तो कम से कम इतना वेतन देना ही होगा। न्यूनतम वेतन बोलते हैं, मिनिमम वेजेस बोलते हैं। प्रोविडेंट फंड बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति रिटायर हो तो उसको कितना पैसा मिलता है एक साथ। यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है, उसको अधिक वेतन मिलना चाहिए, ओवर टाइम की पेमेंट मिलनी चाहिए। ये सारे श्रम सुधार जिस व्यक्ति ने किए हैं भारत में, वो डॉक्टर अम्बेडकर हैं। इसलिए वो जिम्मेदारी केवल दलित समाज की नहीं है, देश की सारी महिलाओं की भी है, देश के सारे मजदूरों और नौकरी करने वालों की भी है। इन सबके प्रति, सब ठीक है ना, इन सबके प्रति डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका ऐसी है कि हम उसको भूल नहीं सकते। अंतिम बात, आपकी स्थिति को देखते हुए जल्दी खत्म करके, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, क्या सीखना उनसे हमें मुख्य रूप से 3-4 बातें सीखनी है।
उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ सीखा है 3 व्यक्ति से सीखा है, बुद्ध से सीखा, कबीर से सीखा और ज्योतिराव फुले से सीखा। सच बात है कि उन्होंने अपनी माँ भीमा बाई से भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि माँ ने ही सिखाया था कि भूल के भी झगड़ा मत करना, पढ़ना। और उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ये भी था कि जब उनकी माँ की मृत्यु हो रही थी तो कोई वैद्य उनके घर तक नहीं आए, क्योंकि वो अछूत महिला थी, तो वैद्य उनके घर में कैसे आ सकता था। और तब उनको लगा कि मेरी माँ जिस रोग से मरी वो तो चलो एक दैहिक रोग था, पर ये समाज जिस मानसिक रोग से ग्रस्त है उसका इलाज जरूरी है। तो जीवन भर उन्होंने वो किया। अम्बेडकर जी से आपको और हमें क्या सीखना चाहिए? मैं तो अपने हिस्से का सीखता हूँ, आपको भी क्या सीखना चाहिए? देखिए, जो समाज का वंचित समुदाय है जिसमें हम में से अधिकांश लोग आते हैं, आपको समानता की स्थिति में आना। अम्बेडकर जी बड़ा सुंदर संविधान देश का लिख के गए हैं। उस संविधान में एक हिस्सा मूल अधिकारों का है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे संविधान के मूल अधिकारों में सबसे पहला अधिकार समानता का है, न कि स्वतंत्रता का है, क्योंकि समानता जरूरी है। और अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 अनुच्छेद पूरी तरह से समानता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और आर्टिकल 17 में साफ साफ लिखते हैं अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध होगा और दंडनीय होगा। अपने मरने से 1 साल पहले दबाव डाल के 1955 में उन्होंने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी पारित करवा लिया, जिसके तहत अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता को या छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? आपको क्या सीखना चाहिए? पहली बात, उन्होंने बड़ी गहरी बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है और जो इसको जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। बिना शिक्षित हुए कुछ नहीं होता। और यहां तक कहा कि तुम्हारे पैर में जूते हो ना हो, हाथ में किताब होनी चाहिए। क्योंकि एक जीवन में अगर आप चाहते हैं कई जीवन के बराबर जिंदगी जी के आगे बढ़ना, उसका एक ही रास्ता है, किताबें, पढ़ाई। इसके उदाहरण को डॉक्टर अम्बेडकर। आपके समाज के पास ना उतना पैसा है, ना उतनी जमीन है, ना उतनी संपत्ति है, ना उतना रसूख है, ना उतनी पॉलिटिकल ताकत है। जिन समुदायों, जिन परिवारों के पास ये सब नहीं होता, उनके पास आगे बढ़ना एक ही रास्ता बचता है, वो है शिक्षा, तालीम। और सोशल मीडिया ने एक अच्छा काम ये किया गया कि अच्छी अच्छी पढ़ाई, अच्छे अच्छे अध्यापक अब आपके मोबाइल फोन की मदद से आप सबके घर के अंदर पहुंच चुके हैं। अब तो हमारे पास ये भी कहने को नहीं है कि अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। जो टीचर दिल्ली को मिलते हैं, जो जेएनयू को मिलते हैं, जो मुंबई को मिलते हैं, देश के अच्छे अच्छे संस्थान को मिलते हैं, हार्वर्ड को मिलते हैं, वो सारे के सारे ऑनलाइन, और उनमें से बहुत सारी क्लासेज उनके निःशुल्क यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। अगर आपके अंदर पढ़ने की जिद हो तो आज पढ़ना पहले की तुलना में बहुत आसान हो चुका है। असली बात है कि आपके अंदर वो जिद है या नहीं। दूसरी बात, मैं IAS के लिए पढ़ाता हूँ, दृष्टि नाम की संस्था हमारी है, और हमारे बहुत सारे बच्चे IAS बनते हैं, जिनमें से बहुत अच्छा अनुपात उन बच्चों का है जो SC ST कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से होती है। मैंने एक चीज देखी है, आपसे विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो समाज के पिछड़े समुदाय से आते हैं और उनको इस बात की बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं पिछड़े समुदाय से हूँ। उनको आरक्षण मिलता है, वो IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, और IAS IPS बनने के बाद कोशिश करते हैं कि उनकी वो पहचान खत्म हो जाए कि वो पिछड़े समुदाय से हैं, और वो किसी उच्च समुदाय के व्यक्ति से शादी ब्याह करके अपने आप को वहाँ एक्सेप्ट करवा ले किसी तरह से, ऐसी उधेड़-बुन में लग जाते हैं। मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाह रहा हूँ, जिस समाज से आप हैं उस समाज को लेकर शर्मिंदा कभी नहीं होना। आप सिविल सेवक बनेंगे, नेता बनेंगे, पुलिस वाले बनेंगे, जज बनेंगे, जो भी बनेंगे, आपकी मुख्य जिम्मेदारी संविधान के प्रति है, अपने दायित्वों के प्रति है, एकदम ठीक बात, उसमें कोई कोताही करने में नहीं चाहिए। पर ध्यान रखना है, आरक्षण के पीछे का मूल तर्क क्या है? आप सोच के देखिए कि इस देश में कुल नौकरियां अगर मैं मान लूं केंद्र में तो 1 लाख के आसपास, जिनमें SC समाज की 15,000 के आसपास होंगी। SC समाज की कुल आबादी अगर हम देखें, इस समय 16% से ऊपर आबादी है। अगर 150 करोड़ दिमाग में रखने, 140 करोड़ रखने, तो 23 करोड़ के आसपास आबादी दलित समाज की या SC समाज की भारत में। 23 करोड़ में से अगर 15,000 लोग नौकरी पा लेंगे, क्या इससे दलित समाज की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी? नहीं होगी, वो तो 15,000 की होगी। तो आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण का उद्देश्य ये नहीं है कि लोग अमीर हो जाए, वो तो 15,000 हो गए। आरक्षण का उद्देश्य ये है कि जब पूरे एक गांव में एक दलित बच्चा या ST बच्चा या OBC बच्चा IAS बनता है या जज बनता है, उस गांव के हर व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि दिक्कत आएगी तो मेरा छोटा भाई मेरे साथ खड़ा होगा, और आपको वो छोटा भाई, छोटी बहन बनना है। जिस दिन आप सफल हो जीवन में, आपके समाज ने बहुत आहुति दी है आपकी सफलता में,
और आप जिंदगी भर भी उनकी मदद करेंगे तो अपना उधार चुका नहीं पाएंगे। कोई ऐसा काम नहीं करना जो गैर कानूनी, जो असंवैधानिक हो, ऐसा नहीं करना। अपनी नौकरी की हदों में रहना है, अपने नियमों का पालन करना है। लेकिन जैसे आप IAS बनेंगे, आपके परिवार में कोई संकट में होगा, उसकी हेल्प करेंगे। ठीक वैसे आपके समाज में कोई संकट में है, पुलिस यदि उसके साथ बदतमीजी कर रही है, गैर कानूनी कृत्य कर रही है, तो उस पुलिस को आप फोन करेंगे तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये आप पता कर सकते हैं। अम्बेडकर साहब से सीखना चाहिए कि मैं जिस पृष्ठभूमि से हूँ उस पर शर्माना नहीं, अगर वो पीछे की स्थिति है तो उससे लड़ना है और अपने साथ साथ अपने पूरे समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए टेढ़ी चोटी का जोर लगाना है। ये सीखना। तो पहली बात सीखनी है पढ़ाई, दूसरी बात सीखनी है अपने समाज का साथ देना, पीछे कोई भी रख सकता है। जाति को लेकर कबीरदास ने बड़ी गहरी बात कही कि व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता से होनी चाहिए, मेहनत से होनी चाहिए। जाति में क्या रखा हुआ है? उन्होंने कहा जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान पूछो, मोल करो तलवार का, पड़ी रह दो म्यान। म्यान में क्या रखा है? तलवार की कीमत। और यदि हम कहते हैं कि पिछड़े समाज के लोग पढ़ने में पीछे हैं, तो ऐसा क्या था कि एक बच्चे को मौका मिला और वो पूरी संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़ाई का व्यक्ति बन गया? इसका मतलब है कि अवसर मिले, जुनून हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और मेरे पास जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं बहुत सारे हैं, उनमें से एक डॉक्टर अम्बेडकर हैं। जब मैं इस रूप में प्रेरित होना चाहता हूँ कि किन व्यक्तियों ने अपनी जिंदगी की आहुति देकर एक पूरे समाज, एक पूरे राष्ट्र की जिंदगी बदली, मुझे अब्राहम लिंकन, मेरी मूज, रोजा पार्क्स, डॉक्टर अम्बेडकर, ऐसे कुछ नाम याद आते हैं। और मेरा मन कहता है कि मैं अपने समाज के बच्चों से, केवल आपसे, मैं अपने घर के बच्चों से भी यही कहता हूँ कि जिंदगी जियो तो वैसी जियो कि आपके जाने के बाद लाखों करोड़ों व्यक्तियों का जीवन बेहतर बने। और एक मजाक नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा कहा कि भाई नायक पूजा मत करना। जब लोग उनका जन्मदिन मनाते थे वो बुरा मानते थे कि यार तुम बिना बात के मुझे भगवान बना रहे हो, ऐसा मत करो। नाराज होते थे कि ये तुम मुझे भगवान बना दोगे तो तुम अपनी जिम्मेदारी भूल जाओगे, सोचोगे भगवान था, इसी का काम था, मेरा काम नहीं है, ऐसा मत करो। उन्होंने खूब मना किया। समाज की अपनी मजबूरी कि यदि कोई व्यक्ति इतना महान काम करके जाए तो उसको सम्मान न दे तो क्या करे। ईश्वर का जन्मदिन भी मनाया जाता है, पुण्यतिथि भी मनाई जाती है, 14 अक्टूबर का दिन भी नागपुर में मनाते हैं। आज 7 नवंबर, आज का दिन बड़ा पवित्र है। आज वो जीवन में पहली बार स्कूल में गए थे, उसी स्कूल में जहाँ दरी हाथ में लेके जाना होता था, ये उसी स्कूल की बात है। और मुझे खुशी है कि ये जो संगठन है यहाँ इस दिन को मना रहा है। और मैं एक अंतिम एग्जाम्पल की बात समाप्त करता हूँ। 1954 का एग्जाम्पल है। अमेरिका में जो स्थिति हमारी यहाँ दलित समाज की है, वो स्थिति अमेरिका में अश्वेतों की रही लंबे समय। हुआ क्या कि जब अमेरिका आजाद हुआ तो अमेरिका के संविधान में समानता की बात लिखी गई। जब समानता की बात लिखी गई तो दास लोगों ने विरोध किया कि अगर समानता है तो हम दास कैसे। 90 साल लगे दास प्रथा को समाप्त करवाने में। अब्राहम लिंकन ने खत्म किया, अपना जीवन दे दिया। तो 1866 में दास प्रथा खत्म हो गई, लेकिन अभी भी अश्वेतों को अधिकार नहीं मिले, महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिले था। अब महिलाओं और अश्वेतों के आंदोलन शुरू हुए कि हमें बराबरी चाहिए। और उसमें एक घटना, बड़ी रोचक घटना है, सुनिए क्या हुआ। 1950 के आसपास अश्वेतों का आंदोलन बड़ा प्रखर हो गया। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीवन के आखिरी दौर में थे, उन्होंने भी उस आंदोलन को देखा समझा। उसमें 2 घटनाएं घटी। एक महिला थी रोजा पार्क्स। अमेरिका का नक्शा देखा हो तो उसमें एक राज्य है अलाबामा। अलाबामा में एक शहर है मॉन्टगोमरी, वहां का प्रसंग है। अस्पृश्यता कुछ मात्रा में अमेरिका में भी थी और देशों में भी थी। कैसे थी देखिए, वहां एक नियम था कि जो सरकारी बसें होती थी उन बसों में शुरू की 4 सीटें केवल श्वेत लोगों के लिए होती थी और चौथी सीट के पीछे अश्वेत लोग बैठ सकते थे। वो भी कंडीशन पे कि यदि श्वेतों की 4 सीटें भर गई और फिर कोई श्वेत आ गया तो अश्वेत को सीट छोड़नी पड़ेगी, ये कंडीशन थी। तो लोग करते थे, बैठते थे, 4 सीट छोड़ते थे, कोई श्वेत आ गया उठते थे, छोड़नी पड़ती थी। उनको खराब लगता था। ये वही पानी है जो उनको नहीं मिलता था, है ना। इसके लड़ना नहीं है, प्यार से लेना है, झगड़ा नहीं करना है। एक दिन उनके जैसा जी के देखो कि पानी नहीं मिला, एक दिन जी के देखो ताकि समझ में आए कि उनका जीवन कैसा था। क्या एक महिला थी जिसका नाम था रोजा पार्क्स, करीब 40 साल की, बहुत ही सभ्य महिला थी, अश्वेत महिला थी। कई बार उस चुकी थी बस में बैठती थी, उठा दिया जाता था। एक दिन उसको बहुत गुस्सा आ गया। वो बस में बैठी थी 5वीं सीट पे, पहली 4 पे श्वेत लोग बैठे, कुछ लोग आ गए। ड्राइवर जिसका नाम विलियम ब्लेक था वो उठा और उसने कहा कि आप उठिए। 3-4 लोग थे अश्वेत, सब उठ गए। उसके उठने का मन नहीं हुआ। ड्राइवर ने फिर कहा कि उठना होगा। उसने कहा ऐसा कि मैं तो नहीं उठूंगा, जो करना करो। बस आगे नहीं बढ़ी। पुलिस आई,
उस महिला का नाम रोजा पार्क्स था, कभी सर्च कीजिएगा नेट पर पता लगेगा। उसे गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। पूरे अफ्रीका को, पूरे अमेरिका के उस राज्य के अश्वेत, यहाँ तक कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो उस समय काफी प्रसिद्ध नेता थे, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। सभी अश्वेत व्यक्तियों से निवेदन किया गया कि सरकारी बस में बैठना ही नहीं। वो सरकारी बस के एक प्राइवेट बस कंपनी को ठेका मिला हुआ था, वो चला रही थी। अश्वेत समुदाय ने बड़ी गजब की एकता दिखाई। 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर उनके घर थे, टैक्सी से आए। अश्वेत टैक्सी वालों ने बस के बराबर किराए में टैक्सियां चलाई, लेकिन बस में नहीं बैठे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होते होते 381 दिन आंदोलन चला। 381 दिन, 1 साल से ज्यादा कोई बस में नहीं बैठा। और अंत में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को खारिज करना पड़ा जिसमें अश्वेत बैठ नहीं सकते थे, और वहां उस आंदोलन की समाप्ति हुई। डॉक्टर अंबेडकर हमारे समाज के रोजा पार्क्स बने, अब्राहम लिंकन बने। और अगर आपको लगता हो कि आपका जीवन खराब है, एक और घटना से अंतिम बात करके समझ लें। अमेरिका में जब समानता आई तो स्कूल शुरू हुए। अश्वेत बच्चे बोले हम भी स्कूल जाएंगे। कुछ कुछ अम्बेडकर जी की याद आपको आएगी इस घटना से। अब अश्वेत बच्चे स्कूल जाएंगे, ये तो वहां के संविधान में लिखा हुआ था। तो वहां की सरकारों ने क्या रास्ता निकाला, कुछ स्कूल श्वेतों के लिए, कुछ अश्वेतों के लिए बना दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि भैया क्या समानता है, हम इसी स्कूल में पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, समानता का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्कूल मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा, लेकिन अगर अलग अलग स्कूल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये व्यवस्था ठीक है कि अश्वेतों का स्कूल अलग, श्वेतों का स्कूल अलग। अब ये बड़ी दिक्कत थी श्वेतों को। आंदोलन चलता रहा 1954 में जब आंदोलन चल रहा था ये वाला, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का, उसको भी लगा कि अब समय बदल रहा है, और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला दिया, ब्राउन का मामला कहते हैं, और उसने घोषणा की कि समानता का जो 14th अमेंडमेंट की समानता उनके यहाँ है, उसके तहत समानता का सही मतलब ये है कि जिस स्कूल में श्वेत बच्चे पढ़ेंगे उसी स्कूल में, उसी क्लास में अश्वेत बच्चे भी पढ़ेंगे। ये 1954 में हुआ। अम्बेडकर साहब 56 में गए, उनके सामने की बात है, 2 साल आखिरी थे उनके पास। अब जब ये हुआ तो अमेरिका में हंगामा हो गया। श्वेत समुदायों ने इतना हंगामा किया, अपने शहर तक बदल लिए ताकि एक ऐसी जगह जाके रहें जहाँ केवल श्वेत लोग रहते होंगे, स्कूल में केवल श्वेत लोग पढ़ें। अब अश्वेत बच्चे स्कूल में कैसे जाएंगे? तो हुआ कि जो बस जाती है स्कूल की श्वेत बच्चों की, उसमें श्वेत बच्चे भी जाएंगे। और मैंने वो कहानियां पढ़ी हैं विस्तार में। जब पहली बार अश्वेत बच्चे श्वेत बच्चों के साथ स्कूल में गए, उस बस को घेर कर पुलिस की कम से कम 10 गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी, क्योंकि किसी भी तरफ से हमला हो सकता था, गोलियां चल सकती थी, बच्चों की हत्या हो सकती थी। और बहुत भारी संख्या में पुलिस बस के साथ साथ स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर खड़ी होती थी। और अमेरिकी समाज को लगभग 70-80 साल लगे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, 1776 की आज़ादी जो दासों की आज़ादी नहीं थी, अश्वेतों की नहीं थी, महिलाओं की नहीं थी। 1866 में दासों की मुक्ति जो महिलाओं की नहीं थी, अश्वेतों की नहीं थी। 1950-55 के आसपास महिलाओं और अश्वेतों की मुक्ति। ठीक उस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 35 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिलना, और उसके लगभग 50-55 साल बाद बराक ओबामा का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना। इतिहास ऐसे बदलता है। इतिहास में हर व्यक्ति को अपने हिस्से की भूमिका निभानी होती है। अम्बेडकर जी ने अपने हिस्से की भूमिका निभा दी, आपकी बाकी है। ठान लीजिए, इतना पढ़ना है। उस आदमी को सोचिए, वो उसने अपने जीवन में पहला रिसर्च एंथ्रोपोलॉजी में किया। अम्बेडकर जी एंथ्रोपोलॉजी के विद्वान, इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, और वो व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस और संविधान के एक्सपर्ट बना बाद में। जिस विषय में बात करेंगे उस विषय के एक्सपर्ट बने। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमर कर सकते? और मैं अंत में ये बात कहकर समाप्त करूंगा, ठान लीजिए उन्हीं की बात, पैरों में जूते हो ना हो। तुम लोग ध्यान से समझो, पानी की बोतल मिले ना मिले, हाथ में किताब होनी चाहिए। और किताब सूरज से धूप बचाने के लिए नहीं होती है। आप बचा लो, कोई बात नहीं। किताब इसलिए नहीं चाहिए कि धूप से बचना है, किताब इसलिए चाहिए कि धूप जैसा तेज अपने अंदर पैदा हो। और एक बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए सफदर हाशमी, उन्होंने मजदूर समाज के लिए एक बात कही थी जो मैं आपको कह रहा हूँ। उन्होंने गीत लिखा कि शिक्षा से ही बदलाव हो पाएगा। वो कहते हैं, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वाले, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ इ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं
उस लड़ाई में ना बंदूक चाहिए, ना तोप चाहिए, ना लाठी चाहिए, ना भाला चाहिए, डंडा नहीं चाहिए, किताब चाहिए, अक्षर चाहिए। और पढ़ना क्या है? हर चीज पढ़नी है। संविधान को घोट लेना है ताकि आपको पता रहे क्या अधिकार है। कानून को ठीक से पढ़ना है, सीआरपीसी आईपीसी को ठीक से पढ़ना है ताकि कोई आपके खिलाफ ज्यादती ना कर सके। हर नागरिक को पता होना चाहिए कि मेरे क्या अधिकार हैं और मैं राज्य से क्या उम्मीद कर सकता हूँ। साहित्य भी पढ़ना है और वो साहित्य देखना है जो साहित्य आम आदमी के पक्ष में है, वो साहित्य नहीं जो भव्य इमारतों के बारे में है। अदम गौंड भी जैसे साहित्यकार को पढ़ना है, कबीरदास को पढ़ना है जो समाज के आम व्यक्ति की जिंदगी को ठीक से समझता है, समझाता है। अदम गौंडवी ने आपके समाज के एक छोटे हिस्से के बारे में इतनी गहरी कविता लिखी, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। ऐसा साहित्य पढ़ना है जो साहित्य समाज के उन वर्गों के बारे में है जिन्होंने जिंदगी की तलखी को, बुराइयों को, संघर्षों को सबसे ज्यादा सहन किया है, उनको पढ़ना है। तकनीक को पढ़ना है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो समाज विज्ञान नहीं पढ़ता, ज्योतिबा जी ने कहा था जो समाज विज्ञान नहीं पढ़ता वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। विज्ञान पढ़िए, तकनीक पढ़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़िए, जो भी नई चीजें हैं जिनसे भविष्य में विकास होगा उन सब में पढ़ाई करनी है। और जितना पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे बस ध्यान रखना है, आगे सिर्फ आप नहीं बढ़े हैं, आपका समाज आपके साथ आगे बढ़े, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये कह के बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
let us take the discussion further. So we try to identify that there are two types of specimens that are employed, which are employed as standard specimens internationally, the RP test as well as ISR test specimens. Now, we have seen the specimen geometry and all that. What now we are going to examine is, we are going to examine the testing scheme with this type of specimens, how is the impact test conducted? That is what we are now focusing attention on. The equipment which is used for impact test is what is called as swinging pendulum impact tester. So let us say, for example, this is the equipment that I am showing here, right? This is called as swinging pendulum hammer. It's called as swinging pendulum hammer. It's called as, and this entire test setup is called as swinging pendulum impact tester equipment. Right? At the top of this, there will be a graduated dial which shows you the readings of energy absorbed by the specimen in the impact test. Right? And there is a pointer that is attached to this swinging pendulum hammer. Right? Now the specimen is going to be positioned here. This is the specimen position. Initially speaking, depending upon whether you are using a chalk piece specimen or ISR specimen, the swinging pendulum hammer is initially set at a particular angle with reference to the specimen axis. This angle is what we call as initial angle of setting alpha. Alpha is known as initial setting angle. Initial setting angle. This initial setting angle is going to be 85 degrees, 21 minutes for ISR test. For ISR test, it is 85 degrees, 21 minutes, whereas it is 140 degrees for standard Charpy test. For standard Charpy test, this alpha value is different. Now, as you look at this testing scheme, once the specimen is properly fixed in position, the swinging pendulum hammer is released from the particular height. Before releasing, if you observe, the swinging pendulum hammer, let us say its height from the ground is something like capital H, is the initial height. Now, when you properly position the specimen, this entire swinging pendulum hammer is released from this height so that it freely oscillates about this pivot. About this pivot, it freely oscillates. Let me show you that path of oscillation of the swinging pendulum hammer may be like this. That is how the path of oscillation will be. So when the swinging pendulum hammer is released, its potential energy mg into h, it gets converted into kinetic energy. With its full kinetic energy, when it strikes against the specimen here, a part of the kinetic energy is absorbed by the specimen in undergoing fracture. With the residual, with the balance kinetic energy, the swinging pendulum rises on the backside. It rises on the backside with the remaining balance kinetic energy, right? The operator allows this swinging pendulum hammer to rise to maximum possible height after fracturing the specimen. When the swinging pendulum hammer reaches maximum possible height, he will operate a hand brake and see that the swinging pendulum hammer is stopped at the maximum possible height. Let us say the height reached by the swinging pendulum hammer after fracturing the specimen is small h. So mg is the weight of this hammer. Mg is the weight of this hammer. Mg into capital H is initial potential energy. Mg into small h is final potential energy. The difference between initial potential energy and final potential energy gives you energy absorbed by the specimen up to fracture. That is what is called as impact toughness. But today on the equipment, there is a graduated dial. This graduated dial gives you the reading of the energy absorbed by the specimen up to fracture. Therefore, dial reading itself gives you impact toughness directly without any calculation. Right? Therefore, I write here, impact toughness is impact toughness. It is dial reading. Given by dial reading, what is this impact toughness? It is the total energy absorbed by the specimen. It is the total energy absorbed by the specimen up to fracture. By the specimen up to fracture. That is what we call as the impact toughness, and it is given by the dial reading directly. Therefore, no need of any calculations for impact toughness. So this is how the impact toughness will be determined in the impact.
So this is how the impact toughness will be. Determined in the impact. But if you see, there is a second objective that we have already quoted. The second objective is that we want to decide what is the ductile to brittle transition temperature in materials. So to facilitate the determination of ductile to brittle transition temperature for a given material, we are going to plot this graph. This graph is energy absorbed by the specimen. Energy absorbed by the specimen. Energy absorbed by the specimen up to fracture, that is plotted on y-axis, right? Then we take temperature on the x-axis. What do you mean by taking this temperature? It means that, for example, we take 10 to 12 specimens. Each specimen is either cooled to some temperature or heated to some temperature. So some specimens are cooled to temperatures below 0 degrees centigrade. Some specimens are heated to temperatures above room temperature. Like that, you are having different specimens, 10 specimens at 10 different temperatures, and then after heating or cooling the specimens to those respective temperatures, conduct the impact test on those specimens and find out their impact toughness. When you find out the total energy absorbed by those specimens at different temperatures and make this graph, you are going to get this graph in this way. That's how the graph will be obtained. Now this graph can be divided into, let us say, 3 different zones. This first zone is what is called as brittle fracture zone. Number 1 is called as brittle fracture zone. The first zone is known as brittle fracture zone. This zone called as number 3. Let me show it by under canvas. Yes, Roman numbering. The third zone is what is called as ductile fracture zone. Ductile fracture zone of temperatures. And this zone number 2 is what is called as transition zone. Zone number 2 is called as transition zone of temperatures. This transition zone is called as ductile to brittle transition during cooling, because during cooling from high temperature to low temperature, you are going from ductile region to brittle region. So during cooling process, this transition zone is called as ductile to brittle transition temperature zone. Alright? During heating process, the same zone can be called as brittle to ductile transition temperature zone. For every material used in engineering design application, this temperature called as ductile to brittle transition temperature has to be decided, and it will be utilized in engineering design applications. Now friends, if you ask me, sir, what is this particular temperature range for each material? That temperature range is to be decided from
impact test results. That is the objective of impact. So more specifically, तुम्हारे सामने दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. एक है impact test डिसाइड कर लेना. दूसरा ऑब्जेक्टिव है for each material used in engineering design, you want to decide what is this temperature range in which ductile to brittle or brittle to ductile transition will take place. These are the two important objectives. Now, with these objectives, the impact test is conducted, and these two objectives will be determined from impact test. Come on, how do you say from this graph what are brittle fractures? वो क्या कोई पूछता है? Somebody asks you what are brittle fractures? Come on, friends. These are the brittle fractures. Brittle fractures are the fractures. This is brittle fracture zone. Brittle fractures are the fractures which take place by absorption of a small amount of energy. Usually at low temperatures. Yes or no? बोलो मेरे साथ. Yes बेटा. Brittle fractures are the fractures which take place by absorption of a small amount of energy, usually at low temperatures. About what are ductile fractures? Ductile fractures are the fractures which take place by absorption of more amount of energy. ये वाला है ना ductile fracture region. So how much amount of energy is required for ductile fracture बोले तो all this amount of energy is required. So ductile fractures are the fractures which take place by absorption of more amount of energy, usually at high temperatures. ग्राफ देख लिया. एक अंग्रेजी सेंटेंस बना दे सकते हैं तो सब्जेक्ट बना दे सकते हैं. See the graph and ductile fractures need more energy than brittle fractures. Ductile fractures take place at high temperatures, brittle fractures take place at low temperatures, and there is always a particular temperature range for every material in which this ductile to brittle transition will take place, and that temperature range is decided based on impact test results. Point is clear? That concluded the discussion related to impact test. So, again. We are now left with two more tests. These two tests are the creep test and fatigue test. Creep test and fatigue test. So shifting the screen. That is right. Creep test. You need to write 3-4 points here. I will give you by dictation. So be aware and be ready to take the 4 points dictation. 3-4 points dictation. Write down, friends. Creep is defined as, write down, creep is defined as a slow and progressive permanent deformation, a slow and progressive permanent deformation in materials कॉफ़ी होना था कड़क एकदम.
हार्ड होना और कम शक्कर। मम्मी हार्ड और कम शक्कर होना। Slow and progressive permanent deformation in materials, subjected to constant stress, and at temperatures approximately equal to 0.4 times melting point temperature. Approximately equal to 0.4 times melting point temperature. Full stop. Next point. Creep is an important phenomenon. Please write. I am giving dictation. Creep is an important phenomenon in applications such as steam turbine blades, gas turbine blades, nuclear components, nuclear reactor components, and filaments used in the bulbs. Next, creep strength is defined as the maximum stress that a material can withstand, for a specified length of time, without exceeding a specific amount of permanent strain, without exceeding a specific amount of permanent strain. Right. Keep a full stop and look at the diagrams that I have drawn on the board. Examine the diagrams that I have shown on the board. Now friends, let me give some minor, simple aspects for you to facilitate understanding of the diagrams. When you see this diagram, it is appearing as if it is a tensile test specimen. And remember, specimen for creep test is almost the same in geometry as a creep test specimen. This appears as uniaxial tensile load. Remember, in a tension test, the stress applied on the material keeps on increasing up to fracture. The stress experienced by the material keeps on increasing up to fracture in tension test. But in creep test, the stress applied on the material remains constant throughout the period of the test. So what?
is creep, sir? Creep is a slow and progressive permanent deformation. It is a slow and progressive permanent deformation in the materials that are subjected to constant stress. You have already written this. So, in creep test, the material is subject to constant stress. Stress will not increase. And creep deformation is a thermally excited process. Means what? Creep deformation takes place more actively at high temperatures than at low. Temperatures. That is the reason why we said creep is a slow and progressive permanent deformation in the material subjected to constant stress and at temperatures approximately equal to 0.4 times melting point temperature. You know what is this 0.4 times melting point temperature? It is approximately recrystallization temperature of the particle heat. Crystallization temperature of the material. Now you are talking about approximately equal to 0.4 times, means below 0.4 times melting point temperature. You are talking about 0.4 times melting point temperature is recrystallization temperature. You are talking about permanent deformation at temperatures less than 0.4 times melting point temperature. बोलने में मतलब क्या है? It is going to be cold working. Now you already know in cold working, come on friends, in cold working permanent deformation will take place, no doubt about it. But permanent deformation in cold working is always associated with strain hardening. So यहाँ पर क्या होना? Strain hardening होना है. Second, sir, how much amount of time it will take? It depends upon what is the temperature up to which you have heated the specimen. Suppose you are trying to conduct creep test at room temperature. बेटा lead tin alloys बोल के alloys है, solder alloys बोलते हैं ना. Lead and tin alloys will undergo creep deformation relatively speedily even at low temperatures because उनका जो recrystallization temperature रहता है it is close to room temperature. But for other alloys, aluminum alloys, copper alloys का जैसा ले लिया बेटा. This creep deformation, if you want to see fracture taking place under constant stress, it may take several years. That means to construct this one graph up to fracture, you may have to continue the experiment for several years. इतना समय किसके पास है? एक टेस्ट several years conduct करने के लिए. इसी का लोग क्या करते हैं बेटा? जो permanent deformation low temperature में बहुत ज़्यादा समय लेकर बनने वाला है, you can bring all the permanent deformation in a short time by heating the specimen to high temperatures. That's why I am trying to show you here by this hatching line convention. I try to show you tube furnace. What is that? I have shown tube furnace. ट्यूब फर्नेस में मैं स्पेसिमेन को रख दिया और इसको कहां पर सेटिंग कर दिया बेटा? अप्रोक्सीमेटली 0.4 टाइम्स मेल्टिंग पॉइंट टेंपरेचर में टेंपरेचर को सेट कर दिया. नाउ देयर आर टू लोड्स एक्टिंग, two types of loads. Number one, mechanical stress, constant stress, which results in strain hardening. Number two, thermal stress. There are two loads acting.
कॉफी ले लेना पहले, बहुत देर से रखे हैं। कॉफी ले ले पहले, बहुत देर से रखे हैं।
चलो स्टार्ट करते फिर से। बहुत ब्रेक हो गया। तो कहां पर
मम्मी इसका तो 500 रुपये का है 2। मिलता है क्या? हाँ वो पैसा आने के बाद मोबाइल नंबर कौन आएगा इसका उठाएगा क्या? क्या रहेंगे? इधर रखना। पापा के पास में देते हैं। पापा के पास में दे देते हैं। तो हाँ। पढ़ रहा है। हाँ वो भी पड़ता। राम राम बाबा क्या कर रही माँ?
वन। चलो भाई फिर अभी रखता मैं, सेकंड लाइव स्ट्रीम करते हैं इसके बाद।